Hi, friends. Welcome to Cricket Shenanigans. Today we have a very, very special guest with us. So let me quickly introduce him. So please welcome super funny stand-up comic, massive cricket fan, excellent quiz master, and nemesis of Kapil Sharma and Shane Warne. We'll get to that in a little bit. I also personally think he's the creator of the best observational joke on cricket, and we'll spend a few minutes talking about it. Please welcome Abhijit Ganguly. Abhijit, please turn on your camera. Hello, what is up? Hi. Hey guys, hi. Thank you, Abhijit. We really appreciate you taking the time. I know आपका plan थोड़ा खराब हो गया. I felt bad for you, but I had some vested interest there. That's why you could join us for the call. Yeah, I'm supposed to be in Ahmedabad right now, cheering एकदम इंडिया फाइनल. मेरे को लगा कि ऐसे फोर्थ डे के मेरे को लगा था फोर्थ डे के फर्स्ट सेशन तक तो चलेगा. मतलब यार थर्ड मैक्स एटलीस्ट थर्ड डे तक तो चलेगा. बट 2 दिन में कब टेस्ट मैच खत्म होता है यार? 2 दिन में ही हो गया यार. ये तो मतलब यार आधी हो गई यार. Right. And Abhijit, so I have on my podcast Jwalin. Jwalin is a very close friend of mine. He's one of the regulars on my podcast. So again, very happy to have you. Again, before we get started, Abhijit, I've been a huge admirer of you since a long time. 2015 से मैं आपके videos देख रहा हूँ. And there are some bits that really stand out for me. Of course, there's the Saurav Ganguly bit. Then, of course, the Kapil Sharma fans discussion, the elder brother, wedding, Modi bits. I mean, all those are absolutely fabulous. And I don't know if you've realized, you are actually the pioneer of the quizzing with comedians, right? I know there are a lot of people who followed you, but you were the first one to start that. Kind of, yeah. I started the quizzing thing and all. Yes. And it was absolutely fabulous. I mean, the amount of effort you used to put in, and I used to love them. I've seen each of them multiple times. Really loved it. Honestly speaking, मेरा तो चलो in front of the camera वाला effort था. I would actually like to acknowledge the wife. She was scoring for you, right? Her effort was, yeah, and yeah, see, she was also contributing in a huge way to that. So yeah, काफी सही बताओ तो मेहनत लगती थी यार. काफी कपड़े पड़ते थे quizzes बनाने में, सब कुछ करने में. नहीं, मैंने quiz आपका देख के मैंने एक अपने friends के साथ किया था. It's very similar format. So really enjoyed it. Again, that's why I kept wondering, are you going to start it again or नहीं? क्योंकि ऐसा कोई plan नहीं है. I have been planning. I've been kind of planning, procrastinating. वो चले ही जा रहा है. तो अभी I'm planning to also open a second channel, which will be mostly non-stand-up content. So I am planning on that, but yeah, I've been procrastinating a little bit as well in typical lazy human being fashion. So bas lazy Bengali fashion as well, right? Bengali fashion, let's be honest. Yes. Yeah. I heard your announcement about your second channel where you're going to talk about football and cricket. उसका एक छोटा सा वीडियो डाला उस सेकंड चैनल में. इतनी बेइज्जती है. ऐसे बोल रहा था कि मैं ये डालूंगा वो डालूंगा. But yeah, I have to start being regular on that. Yes. Okay. So before we start talking about cricket, I want my viewers to know you a little better. So Abhijit, tell us a little bit about your pre-stand-up days. What did you do prior to doing stand-up? So I mean, background-wise, I'm from very conventional kind of a thing. I did business economics from Delhi University, then worked for a couple of years in Hewitt Consulting in analytics. Then I did my masters. After that, I did my masters from Delhi School of Economics. From there, I was placed into Deloitte, and then Deloitte Consulting में 2 साल किया. And तो बिल्कुल ही conventional चल रहा था. And so I started doing stand-up, like gave it a shot at an open mic. Tab to, like even open mics and all in India, it was just at a very nascent phase. So it was just starting off. So तभी open mics होने शुरू हुए थे. Gave it a shot at open mic, and I really liked doing it. And when we started doing that, we had most of us who started back then, we had no idea that this is something we could make a living on. It was something just, I think this is happening, let's give it a shot sorts. So we did it, and it was only after 3-4 years of doing it alongside Deloitte we started making some money out of it. तो फिर उसके बाद अब लग रहा था कि ये कर ही रहा हूँ, तो फिर might as well try to give it full time. Actually, I would have started doing stand-up full time a long back, but it was because of the wife now, and back then Gujarati girlfriend who जिसने मतलब ऐसे ही जिसको मैं पूछता रहता था क्योंकि कि क्या सीन है, कैसे क्या है, and she was like,
like like her parents basically she had positioned her parents to be these strict people कि पापा बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है, वैसे ही तुम बंगाली हो मैं गुजराती हूँ, भगवान जाने मानेंगे नहीं मानेंगे, उसके बाद और तुम नौकरी वोकरी छोड़ के जोक सुनाते हो, ये कैसे समझाऊंगी। एंड तो मैं 2 साल तक डेलोइट में काम करते रहते बोलता रहा कि अभी मतलब क्या सीन है, मिलना चाहते हैं क्या है क्या नहीं है, एंड शी वाज लाइक कि पता नहीं अभी, मतलब अभी जब शादी की बात होगी तब आगे देखते हैं। एंड फाइनली वन डे आई वाज लाइक नहीं मुझसे और नहीं हो रहा, आई एम क्विटिंग माय जॉब बिकॉज़ ऐसे तो दिस वे आई विल स्टार्ट प्रेजेंटिंग यू ओनली। एंड सो आई क्विट माय पेपर्स एंड उसके एक हफ्ते में हाँ पे मम्मी पापा वांट टू मीट यू, लाइक अरे यार। एंड एक हफ्ते पहले बोलते तो एटलीस्ट बोल सकते थे आई वर्क फॉर डेलॉयट, राइट? हाँ एग्जैक्टली। एंड and the worst part was this, when I met her parents they had no issues, और मेरे को इतना लेट डाउन लग रहा था कि मेरे 2 साल मैंने बर्बाद किया, आपकी बेटी ने आपको कहा अमरीश पुरी वाली पोजीशनिंग दे रखी है, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, हाँ बेटा तुम्हें जो करना करो, तुम्हें कोई स्ट्रेस ही नहीं है, साल ले करे यार, खाली पीली में 2 साल बर्बाद किए। So yeah, 2014 I started doing stand up full time and मजाक मजाक में काफी साल हो गए, and yeah. नहीं, but it must have been a huge leap of faith, right? I mean, especially Bengali family में अगर कोई बोले तो it's I mean again, you know, theater को थोड़ा differently देखते हैं, right? In Bengali family, I mean, I am a Bengali, I am a Probashi Bengali like you. Of course, of course. And you know how it is, right? I mean, आप थिएटर बोलो, गाना बोलो तो चल जाता है, बट आप स्टैंड अप कॉमेडी बोलो तो उल्टा एक्चुअली, बिकॉज स्टैंड अप भी उनके दिमाग में थिएटर ही है, और थिएटर मतलब घूम फिर के थिएटर की तरफ, मतलब व्हेन यू थिंक दैट यू हैव मेड योर सन टू बी अ कैपिटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ चलो इसने मास्टर्स कर लिया, सब कुछ कर लिया, कंसल्टिंग में नॉक कर रहा है, लग रहा है अब तो फिर नहीं जाएगा, क्योंकि एक तो बंगाली फैमिलीज में वो फियर तो रहता ही है कि बेटा कम्युनिस्ट बन जाए, तो वो वाला डर तो रहता ही है। तो अब लग रहा है कि कैपिटलिज्म की तरफ चल गया, अचानक से वो बोल रहे हैं, उनको लगा कि फिर से स्टैंड अप थिएटर टाइप ही तो नहीं है, अब जिंदगी इसकी गरीबी ऐसे वाला उनको लगा। So but that's why I had to plan it a lot, like initially every time I'd make money I'd take payment in the form of a check and give my dad the check to deposit in the bank, and Bengali dad जिसका तो favorite time pass वैसे ही है, बैंक में जाने का काम मिल जाए, बैंक में जाना, पासबुक अपडेट कराना ना। हाँ, तो उनको मैं चेक देता था कि एटलीस्ट उनको सेटिस्फेक्शन, अच्छा चलो कुछ अमाउंट तो आए जा रहे थे, इससे वो थोड़ा, बट आई रिमेंबर द time I told my dad this over dinner, my dad did not say anything. He's like a typical, you know, is like Bengali conservative man. After some time, हाँ, जो थोड़ा दब जाते थे, उन्होंने कुछ बोला नहीं, वो तो खाना खाते खाते बीच बाइट में रुक गए, हैं तुम नौकरी छोड़ रहे पर स्टैंड अप। मैं अपने रूम में ही खाना खा रहा हूँ करके उठ के चले, कुछ बोला, but that was a very funny situation. Yeah. No, and obviously, you know, things worked out for you, but I'm sure it was a huge decision. एक चीज बताओ तो आपको आपकी वाइफ अभिजीत बोलती है या अमर्त्य बोलती है या विक्रम बोलती है? Oh, you heard that also. हिस्ट्री हम रिसर्च किया हुआ है हमने। Yes, that's no. She calls me Abhi only, so that's the shortest, because during the Amartya and Vikram phase, तो वो कभी जानी नहीं, इसीलिए उसके लिए तो मैं हमेशा से अभिजीत ही रहा हूँ। That's a great catch. I did not expect that kind of suddenly एकदम ये आया bouncer। So it's funny thing, right? My name is Abhishek, so my wife also calls me Abhi. So that's a very common thing between names like Abhijit, Abhinav, and Abhishek, right? Yes. My only issue is that my name is spelling is little weird, so it's Avijit, if you might have noticed. Of course I've noticed. There's no H. Yeah. And this ideally in every Abhishek and Abhijit they should be an H. तो ये मम्मी का न्यूमरोलॉजी वाला जो वो होता है कि एक तरफ पूरा एक्स्ट्रा ए ऐड करने के उन्होंने एच ड्रॉप कर दिया, बेसिकली एच ड्रॉप कर दिया, कुछ तो खिलवाड़ करते कि बच्चे को देख के लगा कि इससे खुद से तो नहीं होगा, तो इसको कुछ तो एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत है। Nice. So Abhijit, abhi I know you've started shows again. I know आप Calcutta में थे recently. I'd seen some videos. So any plans of coming up with a stand-up special anytime soon? So see, special तो है, बस वो बात ये है कि special का मतलब जो OTT पे बिक जाए तो special करके निकलता है। Right. So it is basically special is definitely there. I have a decent amount of content, but it's in talks going on with some OTTs and everything. कि अब ढंग का दाम भी मिलना पड़ेगा, सब कुछ वो सब it's that all negotiation and all is going on. So touch fingers crossed. Let's hope something will work out. Yes. तो अभी आप कहाँ पे हो? Are you in Mumbai or are you in Delhi? I'm in Bombay under the threat of कि कहीं फिर से लॉकडाउन ना शुरू हो जाए यहाँ पे, उस डर में ही जी रहे, but yeah, right now I'm in Bombay. I'm based out of Bombay. Okay.
Cool, cool, cool. Okay. So let's get started. So Abhijit, tell us about your first memory of watching cricket. I know you are an avid fan, and you are few of us, people like us who really love watching Test cricket. So that's something unique. And A lot of and people have. and yeah, that's the thing. It's a very weird thing. I like Test cricket a lot more than any of the T20s and the Yeah, IPL. yeah. मतलब देख तो कुछ भी लेंगे क्योंकि खाली टाइम है तो देख तो Correct, लेंगे. correct. But Test cricket for me is The has a ultimate, different absolutely. charm. I think that's common between the three of us. I mean, we love Test cricket. I mean, T20 जैसे बोलते हैं ना मसाला के लिए देख लो, कुछ करने को नहीं है, हाँ. टीवी में कुछ अच्छा आ नहीं रहा है, तो you just sit down and watch a T20 game. But I think Test cricket is the real deal. Test cricket, it's basically like watching a story unfold. Every test match has a story, the ups and downs, the everything. It is a proper story. You're seeing a person fail in the first innings and second, like even Virat Kohli, the second test, like after second test ही था ना, हाँ, second. second test ही था ना, जिसमें first test में तो first ball पे bold हो गया जिसने because he tried to drive, and second innings because he like applied himself and tried to give himself that shot again. That no, I'm gonna take the bowler seriously right हाँ, now. against the Not with spin just a नहीं gap खेलूंगा, off. with the spin खेलूंगा and all that. हाँ. वो because first innings में वो swagger से भी आया था, I think with the cap on कि भाई देखी जाएगी ऐसा तो पापा बन गया हूँ, बैटिंग तो हाँ. आसान नहीं होगा. So it's a great story unfold. So Test cricket has a lot, just a story of itself in every match, which is beautiful to watch. And especially the close ones, right? Every session the game changes. It's just so fascinating. And honestly, I mean, you're much younger than us, of course. But हम लोग तो 90s का टेस्ट मैचेस देखते थे, आधे से ज्यादा टेस्ट मैचेस ड्रॉ हो जाते थे. But if you look at the test matches in the last 20 years, काफी result oriented हो गए हैं, which again is a huge compliment to test cricket. That's what I feel. I mean, there's so much of these days talk about how these pitches are not good for 5-day cricket, 5-day cricket pitches. Honestly, 5-day जो last करने वाले matches कौन से होते थे? वो तो batting friendly बस चल रहा है कि श्रीलंका हाँ, ने draw वाले होते थे, 5 इंडिया दिन 600 खेलने मार वाले. रही है, चल ही जा रहा है, चल ही जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा. तो वो पर उसका फायदा क्या है उन matches का? So I'd really much rather see these matches at least that come to a conclusion. These are just basically, if you look at it, it's bowler friendly, like even spin, yeah, to pace, yeah, but it's at least giving a result. So I'd much rather have this than per se वो pitch worthy of 5-day test match जो चल रहा है जिसको पता ही है कि draw जिसमें रिजल्ट नहीं होगा. हाँ, हाँ, नहीं, absolutely. And honestly, अगर आप ये वाला टेस्ट मैच का विकेट भी देखो, अहमदाबाद, it wasn't really a very bad wicket. I think एक तो पिंक बॉल का फैक्टर था, it was skidding on. वो बोल रहे थे ना, the ones which were not landing on the seam, जो बाकी दूसरे पोर्शन में पड़ रहा था, that was skidding on straight. And if you see, आपका 30 में से कुछ 20-22 विकेट तो स्ट्रेट बॉल पे गए. हाँ, स्ट्रेट बॉल पे. That's what. And although बोलने में ऐसा funny लग रहा है कि but genuinely a pitch can't be blamed for bad batting also, right? If everybody does not, and I mean I get it, like the Chennai second test wall, it was like वो बहुत ही dusty था, tracks थे, वो सब थे. It was nothing like that in this test. I mean, for me at least, it's my opinion that this is not that bad a thing at all. If people are playing bad, I mean, it's hilarious me calling people batting bad because मेरी बहुत ज़्यादा बेकार weird लगता है बोलने में. But yeah, at that level you have to play with some application. And honestly, Rohit Sharma, when he was playing, everybody after getting set, they seemed like they would be in there for the long haul. So I genuinely don't think it was that bad a pitch for there to be so much debate about this. Yeah, and it's and even the English opener. I mean, he started really well, right? He was playing very positive. 60 odd balls में 50 बना दिया उसने. He was looking very good, and they were 70 for 2 at one stage. If you remember in the first innings, all of a sudden collapse हो गया. Jolin, you were saying something. Both of them. Yeah. So I had something correct. So I think as Abhishek, you mentioned, like last 20 years, I think test cricket is like more fun to watch, result oriented pitches and so on and so forth. I think I would also credit some of those to the T20 and the ODIs that has been played, correct? Because I think batsmen's techniques have changed. They have become more aggressive and so on and so forth, correct? I would say technique improved for bad, I would say, for the test cricket, but it is helping test cricket in terms of getting us the results, correct? If you look at it, I think not every day is same. I think be it in Australia, be it in South Africa, even in England and in West Indies, and of late, I would say for last couple of years, we have seen
underdogs winning the test matches. I think West Indies winning against Bangladesh in Bangladesh. India, I think it's a miracle, but we won against Australia in Australia on Brisbane last day. Yeah, so I think off late, I think even West Indies winning against England in England first test match, even though they lost the series. So I think it has become a level playing ground, and anyone can win any test match in any condition is what I have seen because of T20 cricket is what I would say. Yeah. So, Julian, are you kind of? I'm just trying to understand this better. Are you saying that basically because of T20 and that, like it has become batsmen are more risk taking and adventurous. So in a sense, their technique, like their approach is more of a rash approach. That's why they're getting out. That's why it is helped in getting results. I wouldn't say rash, but I think obviously they are playing more shots and more strokes. Yeah, that gives a chance. If you look at the Cook, correct, and if you compare the Cook with the current English openers, I think they're more aggressive. They're scoring more runs. Cook or Trot, and they used to play sessions like 30 overs and score only 10 runs. But if any one playing now 30 overs, probably at least score 50, 60 runs, correct? Obviously, when you hit your bat to more balls, I think you will have a chance of getting catch out and run outs. Even run outs are happening frequently in nowadays. So I think it all amounts to the kind of cricket every country is playing, and then I would give some credit to T20 and ODI for that. But yeah, we are loving a Test cricket right now. I think it is at pinnacle, I would say. And with that, India trying to get the final spot for Lord's match, correct? Most likely it would be New Zealand. Yeah. Yeah. No, it is confirmed. It's confirmed. It's New Zealand only. Second, New Zealand is confirmed. It's either India or Australia. अपना clear नहीं है ना, because if last वाला हारना नहीं है बस, last वाला हारना. पेन भैया बब्बा ऐसे एकदम एक पैर पे खड़ा होकर तपस्या कर रहा है कि इंडिया हार जाए ये वाला मैच, because तो पागल हो जाएगा खुशी से. नहीं, and हारने के चांस है. हाँ नहीं, वो तो देखो कुछ भी हो सकता है गेम में, बट आई थिंक अहमदाबाद में ये होगा, एंड इतना ज्यादा डिफरेंट तो होगा नहीं. विकेट नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, थोड़ी जाने देगा. Anyhow, we'll come to that, but I somehow think that one of the turning points of Test cricket, because if you remember 90s के end में ना, there was a time जब Test cricket was not in very good shape. And that 2001 series, I think, against Australia had a huge role to play. Huge. Mano na mano, Jolin, 2001 ka series was very important for Test cricket in general, because that is still considered as one of the best Test series ever. Correct. So that Test series had a big role to play. Okay, so let's. For me, I remember go ahead. Glenn McGrath का एक article आया था जब when they had won 16 test matches. 16 test matches in a row. You're right. तो Glenn McGrath का article आया था after the second day or something in Eden Bay. He's maybe I'm confusing. Like 17 seams in sight or something like that. 17 seams in sight उसका TOI पे sports पे article आया था. और वो I distinctly remember reading that article that 17 seams in sight. And उसके बाद तो and if you remember back in those days, McGrath का तो favorite होता था ना, before every series he used to predict 4-0 उसका favorite prediction होता था every series. What a mean bully he used to be. इतना funny लगता है ये सारे ऑस्ट्रेलियन लोगों को after retirement एकदम प्यारे प्यारे से cute से लोग देखते हुए, कितने mean bullish. Yeah, and it's weird, right? I mean, Australians off the field are possibly one of the nicest people. I mean, if I don't know if you have followed Matthew Hayden's का cookery show है उसका, and he appears to be a very docile person, but वो field में कैसा होता था वो? खाने को दौड़ता था सबको. I think मतलब for a bowler, अब मतलब can there be a worse sight for a fast bowler than Matthew Hayden just deciding to walk towards you? हाँ, charge towards तुम भी भाग रहे हो, वो भी आगे आ रहा है. And I remember that mini moment when Robin Uthappa also started replicating the same. मैं भी ये करेगा, but he used to not have that much of success. With different results though. Very different results. Man, that was for Australia. At least that Australia team was unbelievable. मतलब वो तो एक के बाद एक आता था. Right. It's so weird to see people right now saying that this, like people were saying during this series also, that this Australian bowling attack is better than that one. Are you kidding? No way. I can never buy that. God, like Bana थोड़ा Hazelwood चलो ठीक है अच्छा कर लेता है और Pat Cummins भी puts an effort, but
Dude, They are definitely no McGrath, Shane Warne or Jason Gillespie or Brett Lee for sure. सवाल ही नहीं है, उसके आसपास ही नहीं है, तो मतलब नहीं, आपका बिगेस्ट प्रूफ ये है, they did not need a fifth bowler. वो लोग 4 bowlers के साथ खेलते थे, क्योंकि Gilchrist were at 7 and then 4 bowlers, no all rounders, and they were winning all over the world. And legit having like अभी भी ना थोड़ी goosebumps type की feeling आ रही है just talking about those guys and how much they used to dominate and decimate and क्या Absolutely. मैं आपको एक incident बताता हूँ. So this was again the 2001 series. So I was in Pune. So I was doing my engineering in Pune that time. तो 2001 में हम लोग गेम देखने गए थे. पुणे वाला मैच था. I think it was the second or the third one day. And उसमें India had lost. I think Badani had scored 100 and Marquardt scored 100 for Australia. उसमें हमने उसको देखा था, Hayden को देखा था नजदीक से. So he's like a block. मतलब उसका his shoulders were like this broad, and you would get intimidated just looking at him from a distance. Just try to imagine India के जो spinners होते थे, पतले पतले सब, हरभजन पतला, Raju, and these guys, in front of Hayden, they used to look so puny. And stories ही इतना funny लगता था पढ़ने में कि they are going deer hunting with spears, नहीं, boar hunting with spears. Boar hunting के लिए ये इनका शौक है, ये टाइम पास के लिए. वो like I remember there was a story of Andrew Simons and Matthew Hayden का boat stopped working in a shark infested water, so they just swam across. Yeah. In shark infested waters. swam. It's just क्या लोग हैं यार, सुन के डरावना लगता था यार वो लोग को. Absolutely. I'm glad we are having this discussion on Australia, because this is the perfect segue to the topic we want to discuss, right? Yeah. The topic is, of course, Sandpaper Gate. And before we get into Sandpaper Gate, let's talk a little bit about ball tampering in general, right? Ball tampering, if you recall, ball tampering became a big thing in the early 90s. So again, Abhijit, I don't know how much you remember, but Jwalin, you and I were, of course, we remember stuff from 1990. 1990 mein, when 92 mein, after the World Cup, Pakistan had toured England. And वहाँ पे वकार and वसीम ने 4 टेस्ट मैचेस में दोनों ने मिला के कुछ 50 या 60 विकेट लिए थे. And that time there was a huge allegation on them that these guys were ball tampering, because they were reverse swinging the ball and all that. So that is where a lot of ball tampering allegations started. So that is kind of the genesis of ball tampering. And then of course that's some of the later incidents that we know. एक Mike Atherton वाला था 1994 में, उसने dirt घिसा था बॉल पे. Then Sachin Tendulkar was accused of ball tampering in Port Elizabeth. So that was a whole big deal with Mike. But I mean, but I don't know. Like, I would like to understand your opinion also. But there's been very candid confessions of like Shoaib Akhtar and all ने openly बोला हुआ है कि हाँ हम करते थे. So and because I think a lot of this has been because of the advent of technology and the cameras catching these things rather than the thing itself. Like. I mean, honestly speaking, again, that those pitches you are like we are just discussing, इसमें लोग ऐसे आ रहे हैं, run बनाए जा रहे हैं. It's a very bowler unfriendly kind of a situation. So why like? मेरे हिसाब से तो लीगल कर देना चाहिए बॉल टैम्परिंग को. दोनों साइड करेगी, राइट? दोनों साइड करेगी. मतलब करने दो. मतलब या तो बिल्कुल ही वो करो, या तो but ये सोचना कि नहीं होता is very stupid, because lot of these players have come up openly and talked about ki haan we were doing it. But I'll tell you something, Abhijit, Aurik and Jwalin, tell me if you guys agree. So I understand ki ball tampering sab log, but it is also a skill to bowl with a tampered ball, because सब लोग उसका advantage नहीं उठा सकते. They talk about reverse swing, right? Reverse swing तभी effective है जब आप 145 के ऊपर bowling कर रहे हो. If you're bowling 130, the reverse swing, tampering the ball is not going to matter that much. So, and that is the thing, no? So with reference to that sandpaper thing, the biggest gainer of that was Stark. Like actually, Pat Cummins Pat Cummins has been more of a, again, thoda kind of McGrath school. Right. Not McGrath school, but much faster, of course. But basically, he's not accurate. He's a very accurate bowler, line and length. But not reverse swinging has been Mitchell Stark in this, at least bowling lineup. Mitchell Stark ka reverse swing ka wo raha hai. So he has been the biggest gainer of this. So yeah, of course, it is, one has to have the skill set also to take advantage of a tampered ball. But I also understand that why it can't be legalized, because how will you then put an end to it?
like basically फिर तो कोई बॉल को चीड़ फाड़ के स्पिनर भी आके एकदम नहीं देखो आप you can I think you can put around some rules and regulations around it, right? आप चीर फाड़ नहीं कर सकते, but tampering in the sense थोड़ा scratch करना, यार लेदर का बॉल है, and you know I mean we've all played cricket, तो लेदर का बॉल को अगर आप I mean just maybe don't allow external sharp objects. अगर आप जैसे ये घिसना है थोड़ा, जैसे अभी तो खैर कोरोना की वजह से तो आप वो भी सलाइवा भी नहीं लगा सकते, बट I mean just imagine you know bowlers को जब वो श्रीलंका के टेस्ट मैच जैसा 97 का अगर वैसे विकेट्स मिले तो क्या करेंगे bowlers? क्या करेगा bowlers have no way to go. I mean at least give them something. Either फिर bouncer ले आओ वापस, जिसमें द सना जयसूर्या का 300 वो भाई साहब वो तो टेस्ट मैच क्या था यार. राजेश 550 बनाए थे, इंडिया ने 550 बनाया, उन्होंने 950 बनाए. क्या है यार, ये क्या चल रहा है क्या है यार. So I think, so Abhishek, so I think I would say from, see, ball tampering, the term itself is negative, correct? But I think within the rules, I think everyone is allowed to temper the ball, because see, in every team, you will see a couple of players with the long sleeves, correct? I think they stand besides bowler, fast bowler in particular, they apply saliva. And when you talk about saliva, correct, I think if you see most of the players who is like pro in, you know, rubbing the ball with either long sleeves or trousers, I think they either have some sort of chewing gum or some sort of, you know, they have something in their mouth which probably would to an extent temper the ball, but that is allowed well within the ICC rule of conduct or whatever, correct? Only objects which are not allowed is like, you know, I'm sorry for interrupting. Abhishek, you would have heard this Bengali proverb, Churi vidde mahavidde jodina pado thoda. Right. Like the what is like basically to translate during that जब तक पकड़े नहीं जाओ तब तक ही नहीं है, जब तक पकड़े नहीं जाओ. Yeah, sorry for but what I'm going to say is it is actually allowed. I mean, we are not allowing external objects like, you know, soda bottle cap, correct? Which I think actually by ICC rules, you're not even allowed to, rule wise, you cannot even apply mint. जैसे होता है ना mint gum, you cannot rub that also on the ball, based on the ICC rules. But हाँ, you're right, side में तो चलता रहता है. But what I was trying to say is, तुम tamper भी करो, but उसके बाद ना उसको, they shouldn't call it ball tampering. That should be called ball maintenance, because if you know how this kind of weaves into how reverse swing came into being. You know, Sarfraz Nawaz and Imran Khan were the first people to start reverse swinging the ball. And basically the science was very simple, right? You shine one side of the ball and you try to make one side heavy and the ball will move towards the heavy side, right? Basic science. And ball tampering में भी यही करते हैं. Basically, you know, when you scratch the ball, what essentially happens is, again, I don't want to be too technical, but basically क्या होता है कि air resistance change होता है ना उसमें when you're tampering the ball. And in some cases क्या होता है, when you start removing stuff from the ball, वो weight differential आ जाता है ball में, and then it will move towards one side. जो 60 ओवर के बाद होगा वो 20 ओवर के बाद से होना शुरू हो सकता है अगर tampering करे तो. Correct. And again, you know, so sandpaper gate was a major thing in the world of cricket, right? So Abhijit, what is your take on sandpaper gate? So because even that series, first of all, that series was insanely competitive, very intense. Everything in that series, the Mark Boucher, David Warner, and David Warner before that series was before that incident was a very different. अभी का David Warner ऐसे TikTok में नाच रहा है, बाला पे वो बहुत अलग है, और वो पहले David Warner अलग लेवल पे पूरा उसका इमेज रिकंस्ट्रक्शन का पूरा प्लान है वो. उसने मतलब वो पूरा ये अच्छा किया है. It's great. Again, off-field he must be a great guy. No, for that, but back then he was basically like a mini Hayden in terms of the attitude. In fact, Hayden also much sweeter person. David Warner was outright nasty. David Warner, outright nasty. His conflict with Mark Boucher and South Africans in general, यार बड़े उनका तो इतना टाइम एंड अगेन कटा है बेचारों का, हर जगह इतनी बार उनके साथ बुरा हुआ. So you already have a soft corner for them, you know, right. In the sense of them, and then Rabada ka that shoulder rub off. So it was a very fascinating series in general. So I genuinely feel that because of the bad blood between South Africa and Australia,
it is easily possible that they all must have been aware, because again, once the sandpaper incident happened, a lot of English players, they उनका knee-jerk reaction में वो काफी चीजें बोले थे, but after that they again shut down. But they said things like, they was doing reverse swing, they were reverse swinging even a lot in the Ashes before that as well. So they tried to imply it, and there was actually even some player also said that David Warner in a pub and all used to even boast about it. He would get drunk and be boasted about it, and we do that. Of course, we do that. So it might have been a known kind of a thing, and just because of the bad blood, they had the cameras on and because I'm not willing to believe that it's the first time I'm just not willing to believe that it was the first time they did it and they got caught. And honestly, Abhijit, I will take one step further. I think there are other teams also who do it. But इस बार I think you nailed the reason. I think there was a lot of bad blood between the two teams, and home board का, I mean obviously the TV coverage जो है वो home board control करता है, right? And they made sure that they caught something like this. And I don't know if you remember, so Bancroft वो बड़ा अकलमंदी से कर रहा था वो चीज. It was not very, I mean, unless एकदम close up ना लो तो पता नहीं लगता वो जैसे कर रहा था. Because you know what he did, right? I mean, पहले तो वो बोल रहा था मैं टेप से कर रहा था, and then it later came out कि वो sandpaper था, but वो बड़े अच्छी तरह से कर रहा था उसको. But all of these, in fact, even this thing, I'm just, and this is, I just, while talking, it just struck me that most of these ball tampering things, it always these things surface only when there's a lot of blood between the two teams. Like Sachin का भी जब वो आया था, उसके पहले वो series भी बहुत ही घमासान और वो लड़ाई चल रहा था. So what you're saying is absolutely right, that the home team वो coverage decide करते वक्त they do try to put more cameras on and do try to get that thing out. So, but but uska repercussion was huge, and I the Australia, I mean, of course they lost two of their best batsmen for a year. I think the bigger loss was that David Warner is never going to captain Australia. I mean, he had the same fate as Shane Warne did, right? Shane Warne also, I mean, could have been one of the greatest captains of Australia all time. And then he ended up captaining only in a handful of one-day games, but never got to captain Australia in Test cricket. And I think that might happen. Do you buy it that just those three people were aware of it? No. I mean, it's just not possible. Absolutely not. And I think the captain ko to rap lena hi padta, and I guess there was no escape for Bancroft. He was doing it, and David Warner he was trying to kind of evade the whole situation. He actually even his ban was the most severe, mainly because first of all, he was the one who asked Bancroft to do it. That was one. Second, he tried to evade it even after Bancroft admitted. If you go through the detailed report, it says David Warner tried to evade it. That's why his punishment was the most severe. He tried to evade it, and also he tried to get other teammates also in it. That he said that the senior, what was the term? That senior people were aware of it. Leadership group. Were aware of it. So leadership group was aware of it. He tried to put that. So he tried, because honestly, it's a very stupid. Like, how can it be possible that एक ball के साथ किया जा रहा है and bowlers involved नहीं होगा कोई? Bowler को ही नहीं पता होगा. कोई बैट्समैन का चार्ज उसके बैट पे जो वही बात जो बचपन में होता था ना कि सनत जयसूर्या के उस बैट में स्प्रिंग है या लगा हुआ है बैट में. अरे बैट्समैन को तो पता ही होगा ना, ऐसे थोड़ा ना अब जाके उसमें चवंडाबाज जाके स्प्रिंग लगा के आ जाएगा, मान जाएंगे कोई? तो बॉलर को तो नो एब्सोल्युटली. एंड देखो बैनक्रॉफ्ट घिस रहा है बॉल को सैंडपेपर से, बट दे तो बॉलर को ही रहा है. बॉलर को तो दिख रहा है ना बॉल का कंडीशन. The major benefit is coming to Mitchell Stark's stats, and Mitchell Stark को ही सब फायदा हो रहा है. And how can it be ever possible that उसे मालूम ही नहीं होगा ये क्या चल रहा है यार ये? And the worst thing to come out of the game was एक तो ये तीनों बैन हो गए, प्लस आपका टेस्ट मैच भी हार गए तुम. हाँ त्रिवेदी जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे, सॉरी. Yeah. So I think मेरा take ऐसा है कि I think it's more to do with Australian sports culture, correct? Win at any cost. I think starting से देखो, Ian Chappell के time से देखो, so they always had a history of winning at all costs, and I think वो imbibed है वो लोग के culture में, cricket में in particular, because they were dominating for 10 good years, correct? कोई जीत नहीं, 4-5 World Cup जीते हुए हैं, हर जगह पे Test match जीते हुए हैं, so they cannot even accept that they can even lose, correct? In second string or third string side, and
अफ्रीका का भी एक है. If you look at even the current captain, correct, Quinton de Kock, he is also very good at sledging. So I think those guys are also even good at, poking, and that's what I think must have happened. Boucher, de Kock, and even Faf as well, correct. I think they must have instigated Warner, and I think everything happened, correct. And then that's a culture. I would blame it first, and second, in hostile condition, correct. And when you visit Africa, it is always hostile. At least for India, it was always like that, correct. It is not easy to win matches in Africa against Africa. Like even be it a Sachin, I think everyone's average is low in Africa compared to anywhere in the world. And Australia is the only country I think must have won a lot of matches in Africa in Africa or against Africa, correct? Yeah. So it's something like they keep winning in each other's home ना, like Australia उधर जाके जीतती है और South Africa उधर जाके. मतलब वो उस टाइम पे था जब डुमिनी आया था, if you remember, डुमिनी ने इधर ऑस्ट्रेलिया में जिताया, then ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका में जाके जीतता था. And South Africa used to be one of my favorite destinations. When teams used to tour, especially I used to look forward. Honestly, इंडिया का तो खैर वो तो बायस था ही, देखने का हारता था इंडिया लेकिन देखते थे, बट ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका देखने में बहुत मजा आता था. वो आई रिमेम्बर वो 90s में पोर्ट एलिजाबेथ में टेस्ट मैच था जिसमें वो मार्क वॉ खेला था लंबा, एलन डोनाल्ड और मार्क वॉ का टसल हुआ था. It was amazing. So I used to really love watching test matches in South Africa. In fact, one of my favorite batting passages happened in South Africa. Newlands का टेस्ट मैच था 97 में. सचिन और अजहरुद्दीन ने 222 का पार्टनरशिप किया था in about 40 overs. And मतलब धुएंधार बैटिंग. It was better than, of course, much better than T20 cricket. And against Donald, Pollock and Callis. It's fascinating, no? Test cricket में जब aggression देखने को मिलता है, it's just so much more gratifying than watching T20 के 4 छक्के भी लग जाए ओवर में. But Test cricket में अगर तुम्हारा 6 या 7 की रन रेट पे चल रहा होता, लगता है मजा आ रहा है यार, मजा आ रहा है, पागल हो जाते हैं यार हम खुशी से. तो वो वाला टेस्ट मैच था. उसके बाद इंग्लैंड वाला मुझे याद है जब सचिन एंड सौरव का पार्टनरशिप हुआ था इंग्लैंड में 2002 में. उस टेस्ट मैच में दे स्कोर्ड लाइक 150 रन्स इन अबाउट 20 ओवर्स. So that was also fascinating. So ऐसे passages of test match में होते हैं. Of course, Sehwag used to give us a lot of these, right, in the past. But ऐसे passages याद रहते हैं जब इस तरह के players, when they go slam bang in test matches. Which and again back in those days, almost every team had a good bowling lineup, which was also great. For me, that series of Australia South Africa was the first. I mean, not like the first time, but it was one of the most series of non-India series that I had followed so much. Like मैं उसका मतलब ऐसे शाम को मतलब ऐसे बैठ के ऐसे रॉकिंग चेयर पे अपने बैठ के देख रहा हूँ एकदम पैशनेटली, क्योंकि that series was intense with the and I know Jwalin said that, but मुझे like du Plessis मतलब I don't think they're that like उनका उतना sledging का सीन नहीं होता. Like they are very ऑस्ट्रेलिया के जितना तो नहीं होता है definitely. ऑस्ट्रेलिया का तो I don't agree. Africans are बहुत कमीने हैं मैं बोलता हूँ, and Quinton de Kock in particular I'm saying. So see, that is what it appears, correct, differently. So those guys are, see, they have done it with India as well. Can you do it with Sachin? Impossible. Like you can't even think of having that. So it is all planned and they do it every time. And they have had issues with English team as well. If you look at it in the past, all the controversies happened in Africa when they're trying to win the series. So Africans are bad. I am saying it is as bad as Australians, but I think perceived notion correct वैसा है. नहीं तो अच्छे South Africans are smart sledgers because sledging. बोल सकते हो यार. In India team में there are a lot. So I don't know if there is a VVS Lakshman interview. If you see that, he talks about the Indian people who used to sledge, and उसने बोला India. According to him, one of the best sledgers in world cricket is Zahir Khan. Zahir Khan was a very, very smart sledger. And he was the guy who would not say nasty things to you, but वो इस तरह से leg pull करता था लोगों को, वो उनको ego को hurt करता था without saying anything nasty. And as a bowler I think you have a big advantage, right, sledging में, क्योंकि तुमने as a batsman तुमने cool lose किया तो तुम्हारा wicket जाएगा, you will be out. बॉलर के लिए क्या है, अगर वो कूल लूज करेगा एक हाफ वॉली देगा 6 खा जाएगा, लेकिन हाँ तो इसलिए so Lakshman said he is one of the smartest sledger and वो सबसे ज्यादा reaction evoke करता था Zahir Khan. This I'm curious about, like I would want to hear like what kind of sledging Zahir Khan, because Zahir Khan मेरे दिमाग में बिल्कुल ही नहीं आ रहा. बिल्कुल नहीं, हमको तो पता ही नहीं लगता था, right? हमको सिर्फ the only
image I have is वो 2003 वर्ल्ड कप में वो जब मत बोलो वो मेरे को पता था उसी की बात होगी। जहीर खान का नाम लेते आज भी वो पहला ओवर और उसके बाद से बैठे हुए कि एक बार तो 6 से कम रन रेट चला जाए, एक बार 6 से, बट हुआ ही नहीं। And I'll tell you, Abhijit and Jolin, I'll tell you the story. तो मैं तब so मैं already US आ गया था उस टाइम पे, 2000 I came to the US in 2002, so 2003 में वर्ल्ड कप था। I was a student, मास्टर्स के लिए मैं मायामी में था, so I was in school। तो हम लोग का अपार्टमेंट था, I was sharing an apartment with 2 other people। तो हम लोग के अपार्टमेंट ने हमने पैकेज लिया था वर्ल्ड कप का। So तब it ended up a big deal for students, $250 का पैकेज था, I still remember, which was a big deal for students उस टाइम पे। तो हम लोगों ने लिया था फाइनल। विलो टीवी था क्या? सॉरी, विलो टीवी था क्या? हाँ, विलो टीवी था। तो हम लोगों ने लिया था पैकेज, एंड आपका ऐसा था कि उस दिन 80 लोग हमारे लिविंग रूम में बैठे थे। इट वाज अ 2 बेडरूम अपार्टमेंट। 80 लोग हमारे सारे इंडियंस जो थे हमारे कम्युनिटी के आ गए थे वहां पे। एंड फर्स्ट इनिंग्स के बाद आप मानोगे नहीं, आई वाज द ओनली वन। सारे लोग चले गए थे मेरे रूममेट भी सोने चले गए थे अंदर। मतलब वो 360 जो बना था, दैट ब्रीफ मोमेंट जब सौरव गांगुली थोड़ा आगे बढ़ के मारने जो मेगरा को उसने 6 लगाया था, तो मजा आ रहा था थोड़ा सा। ऐसे वी हैड स्टार्टेड ड्रीमिंग अ लिटिल, क्या हो सकता है क्या ऐसे। But उस टाइम पे 360 was just too much, and against that Australian bowling lineup, I mean, it's 360 especially after the in the group stages, the match that India had against Australia where they got massacred, 125 all out हो गया था। India did not bat first. That was the only reason India gave them to bat first after winning the toss also. So otherwise though, no, and honestly, I thought Saurav Ganguly got unnecessary criticism for not batting first, because against that Australian bowling lineup, honestly, I would worry also, and especially India chase इतना अच्छा कर रहा था। But how would you bat first after that first group match? Like after that match, मतलब मैच खत्म हो गया था। And a lot of people say कि final में it's always better to bat first. Again, I don't agree all the time, क्योंकि साउथ अफ्रीका में जो पिचेस जैसे थे, साउथ अफ्रीका इंडियन पिचेस जैसे तो है नहीं कि सेकंड इनिंग्स में स्पिन होगा, रुक के आएगा। साउथ अफ्रीका में अच्छा खासा आता है। I mean, India just needed to bowl better. I mean, that's all it was. So I didn't agree with that. मैं तो पॉजिटिव था जब सहवाग खेल रहा था, तो शायद हो जाते थे, because only he could have done it. सचिन को 10 बार भेजो तो भी हार जाते थे। आई थिंक सहवाग ही कर पाता था। ऐसा मत बोल, सहवाग वनडे में तो सहवाग उतना भरोसेमंद नहीं था। वनडे में अरे बट मैं उसमें मैवरिक लोग चाहिए, मतलब इसमें यू डोंट नीड टेक्निक एंड पागल लोग ही कर सकते थे वैसा। अरे पागल कर सकता था, या फिर सौरव गांगुली खेलता तो कर देता, क्योंकि वो खेलता है बंदा, पता नहीं, बट या वनडे में तो खेलता है भाई। और साउथ अफ्रीका में तो उसने थोड़ा तो बायस रहेगा ना त्रिवेदी जी, थोड़ा तो बायस समझ लो कि उसको जॉलिन मालूम है वो तो। मेरा तो बायस इज वेरी वेरी क्लियर। नहीं और मेरे तो लाइक सहवाग इज लाइक आइडल, लाइक मैं इट्स लाइक उसके सिवा कोई नहीं है, ऐसा है। सहवाग इज अ वे ऑफ लाइफ यार। कोई गाने गाते अब बात में गाने गाते छक्का मारे, इससे ज्यादा स्वैगर वाली चीज और क्या हो सकती है। we'll do one episode definitely on Sehwag. He deserves an episode. I think there's Sehwag is a way of life. He's चाहे ट्विटर में हो या बैटिंग में हो या कमेंट्री बॉक्स में हो, हर चीज में वो अलग ही, इसका स्वैगर ही अलग है। करेक्ट। तो सैंड पेपर का और एक ये है, मतलब ट्रेजेडी है, करेक्ट। सो आई थिंक क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया हैड टू हैव दैट ऑफिशियल इंक्वायरी डन। उसके बाद पहले वार्नर पहुंचता है ऑस्ट्रेलिया, फिर बैनक्रॉफ्ट पहुंचता है, फिर स्टीव स्मिथ पहुंचता है। दे एवरीवन हैड अ मीडिया इंटरेक्शन। स्मिथ तो रो भी पड़ता है लाइक इन फ्रंट ऑफ मीडिया, करेक्ट। एंड आफ्टर हाँ हो सकता है, बट आफ्टर वॉचिंग दोस 3 मीडिया इंटरेक्शंस, लेमन उसके बाद रिजाइन करता है। Until that point in time, even Darren Lemon was not willing to resign. I think when you talk about leadership group, correct, coach is always part of it. How can you keep coach out of it? It was very crazy. I think they tried to bury some of the folks. And it was a huge cover up. I think Abhijit, you mentioned it, right? I mean, it is hard to believe कि सिर्फ 3 लोगों को पता था, बाकी लोगों को पता नहीं था। हो ही नहीं सकता। आज उनकी शक्ल पे दिख रहा है, उनकी शक्ल पे ना, लेमन की शक्ल पे, he has the look of a husband getting caught cheating. He has the complete face, like उसकी आंखें ना ऐसी दिखी है कि मतलब दिख रहा है कि ये पकड़ा ही ढप्पा हो रहा है अभी, इतना ज्यादा एविडेंट था वो। Yeah. Hey Abhijit, I want to do a quick time check. You how much time do you have?
I'm free only, so we can continue. Okay, great. आप मुझे बता देना, because हम लोग एक बार शुरू कर देते हैं. आपने I don't know if you saw अनिर्बान के साथ जो कॉल चला था हमारा, 2 घंटे तो रिकॉर्ड पे है, उसके अलावा भी 1 घंटे चला था. Yeah, because these topics are only, we can endlessly keep talking about the visual of, but वो आके बोल रहा है and him putting it in his underwear. Oh my god, those visuals are just so funny. That's just, and everything captured on the camera. Side में लेमन की शक्ल, panic struck. Who was the जो आया था वहाँ से, the 12th man who had come in to tell Bancroft कि you have been caught. Who was that guy? I forgot actually. I don't remember. Oh, actually, It is another young guy only. Some guy who has just got some matches only. Acha. I don't remember that on the top of my head. It was insane to watch that. I was also watching the test match, so it was. I mean, honestly, I was loving the drama. And this is the right. Basically, this was the match after the brain fade, like when like Australia and India had. उसको series के बाद ही था ना ये. उसी के 2017 में इंडिया आए थे, 2018 था ये. 18 में. And that brain fade thing, because again that for me that was also, देखो कोहली को जितना भी गाली दे, जो भी बोले, कोहली एकदम मुंह पे बोलता है. Like उसका है कि arrogance और जो भी उसका ये बिल्कुल ये कि जो whatever I feel. He's very upfront. He's very upfront. So when he said that I had seen that before also, and then Steve Smith just dismissing it. Like I don't know what he's talking about, and even in fact Sutherland, जो Cricket Australia का वो है, he also had ridiculed Kohli's take on that I don't know what that boy keeps saying and all that. So I mean, it must be so annoying for Kohli to be at the right end, to be proved that he's right, and still he's getting criticized and he's being called arrogant. Yeah, it was insane, and that's what that happens. So basically, even with criminals, they get cocky when they have done something for a long period of time, and that start when they're slipping. That's when they leaving some proofs and something. So it is only when you've been doing it for some time that you start getting cocky. Like so it is for sure there that these guys had been doing it for a long time, and they would try to, like Australia tries to take whatever benefit they can, tweaking the system a little bit. Because अगर कोहली बोल ही रहा है कि मैं देख ही रहा हूँ इसीलिए क्योंकि 2 बार पहले देख चुका है, तो फिर वो कर रहे थे ना वो. Right. But I'll bring another perspective here, right? जैसे Australians, तो of course Australians have always been like this, right? उसको sledging बोलो, जैसे Steve Waugh mental disintegration बोलता था, उसको mental disintegration बोलो, कुछ भी. But now if you see, I mean, I think Abhishek, you mentioned it earlier कि अभी सारे लोग कितने अच्छे हो गए ना, स्पेशली इंडिया की तरफ. तो मतलब IPL has completely changed the outlook of people towards India. मतलब केविन पीटरसन गाने गा रहा है, हिंदी में ट्वीट करता है पूरे टाइम. So I mean, you can see the impact the IPL has had. I mean, again, बाला पे गा रहा है यार. बाला अपने बच्चों के साथ नचवा रहा है यार. नहीं, आप देखो, मतलब वो हमारे जो not our Prime Minister Modi, but the other Modi. I mean, he came up with this idea, and this completely transformed the game of cricket. I mean, I know it is T20, but what it did to the whole power dynamics of the world. I think India was anyway getting strong, but the IPL to just hit it out of the park. And it's also IPL along with the fact that India का इतना manpower है, India की population इतनी ज़्यादा है. तो मैं बीच में देख रहा था कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का YouTube चैनल अगर देखो ना, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया YouTube चैनल पे ना अपना कुछ मारता है, तो स्टीवन स्मिथ का सेंचुरी कुछ उड़ाता है, तो उस पे आते 15,000 या 18,000 व्यूज. उसके धोनीज विनिंग मोमेंट उन्होंने डाला क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अपने चैनल एक मैच का, उसके 6 मिलियन व्यूज है. तो वो स्टीव स्मिथ के जो डाल रहे हैं ना, उसमें वो कम खुश लगते हैं than धोनीज विनिंग मोमेंट पे नीचे थ्रोज इट आउट, वो उसमें 5 एक्सक्लेमेशन मार्क लगा कि हम भी बहुत खुश है क्योंकि उसको व्यूज इतना मिल रहा है. सो the population factor is also so much there. I don't know if you notice this. So when Kohli decided कि वो आ जाएगा एडिलेड टेस्ट के बाद वापस, पूरा उनका जो टीवी नेटवर्क था, उनके जो सारे चैनल्स, they panicked because they were relying on Kohli स्टार पावर. वो लोगों ने टिकट्स बेचे थे उसके नाम से.
So they actually panicked and they were really lucky कि इस बार India played so well कि India did not feel that, because India का अगर Adelaide जैसा हालत होता लाकी 2-3 टेस्ट मैचेस में उनका व्यूअरशिप खत्म हो जाता. In fact, honestly speaking, I actually feel very bad about that test, because even in that test, India had a decent first. India played very well in the first innings. I mean, India had the lead in the first innings. It was just a matter of one bad hour where everything that could go against you went against you. All half chances taken, all bad luck falling your way, all good luck. So it was just that 1 hour when, and everything was just lost in that 1 hour. So because otherwise it's a once in a lifetime thing. Yeah, 36 ऐसे all out ऐसा नहीं होता है. तो absolutely. And honestly, वो कोहली तो आउट भी नहीं था. तो I was not convinced with Kohli's dismissal. वो जो उसने जो कैमरन ने जो कैच लिया था उधर गली में, it was not clean. I don't know उन्होंने मतलब how they decided on that. So again, you're right. I mean, that's the once in a generation kind of a inning that happened, right? Because India took the first innings lead. उसके बाद किसने सोचा था इंडिया ऐसे बंडल आउट हो जाएगा? But मेरे को इस सीरीज के बाद अगर कोई अब बहुत मैसिव मेरे लिए ऐसे स्केल में कि माय फेवरेट क्रिकेटर अचानक से ऊपर आ गया is Ashwin, the amount of spine he shows in everything he does, he is such a cutthroat. अरे वो YouTube पे भी क्या spine के साथ है यार, उसमें भी bigger के साथ है यार, मतलब he's incredible. I have always liked Ashwin. My only issue was उसका थोड़ा fitness का issue था. I mean वो थोड़ा सा, and especially कोहली के मतलब captaincy में, I think that is an issue. You can't be unfit like that. He always had the attitude. If you see, right from the beginning, उसमें वो aggression तो था ही उसमें. He was a very aggressive spinner. But the thing is that what Ashwin even says honestly. See, some people have that athletic build and they have that athletic frame of body. So Ashwin नहीं है वो. Basically, Ashwin है ही नहीं वो. So even if he's trying to do on it and all that, but I'd be fine with Ashwin का चलो एक फील्डिंग में बहुत ज्यादा रन करके एक चौका नहीं बचाया, as long as he's giving and doing for batting and bowling both is 120% every single time. That's incredible. No, I agree. I think Abhijit थोड़ा that is where cricket has changed a little bit, right? मतलब हमारे golden period में Fab 4 के time में I think you could get away not being that fit, right? अगर आप देखो हमारे सारे जो 4-5 top bats, हमारे एक्चुअली पांचों बैट्समैन कोई भी उतना फिट नहीं था, राइट? फील्ड में क्रिकेट तो माना ही नहीं जाता था फिट. हाँ, तो हमारे जो 5 बड़े प्लेयर थे, पांचों फिट नहीं थे उतने. बट बैक इन द डेज आई थिंक दैट वुड वर्क. ऑल्दो वन थिंग आई विल से कि हमारे वो जो भी बोलो, जो 5 फैब्स थे, स्लो थे, ये थे, वो थे, बट वो कैचिंग अच्छा करते थे सारे. ये करंट टीम को कैच करना ही नहीं आता भाई. दे आर वेरी द करंट लॉट दे आर वेरी पुअर कैचर्स. मतलब इतने कैच तो कभी छूटते हुए नहीं देखे थे हमने उस टाइम पे. Because I mean they were much better catchers. पता नहीं क्या है इस बार. That's also something that somebody pointed out. No, first test में I think with some Australia के against जो हो रहा था first test में, some fielder did that jumped and tried to save the 6. And when he did that, he let that catch go and he realized he was not even that much towards the boundary. तो पकड़ के फेंकने की भी जरूरत नहीं थी. He should have caught it. हाँ. इतना ingrain हो गया with the IPL and all that वो रन रोकना जरूरी है, तो वो खुद के छक्का रोकना उसमें भी क्रेडिट है. जबकि टेस्ट क्रिकेट में तो यार 6 रन पड़ जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, but you try to take that catch, it's way more important than 6 runs. Right. So again, as Jwalin was saying, might have been little with to do with the T20 and the IPLs, but yeah, the catching standards has definitely come down a lot. And which is weird, right? I mean, these guys are fitter players. When you are fitter, you're faster across the ground. I mean, you have so many distinct advantages that you should be better fielders. Although, I think these guys are quick. They are very quick, but their catching is definitely not the best. And the other thing, yeah, go ahead. But honestly, you also know who will be the people who will drop catches. Like माना एक दो recently किए, but जैसे कोहली, रोहित शर्मा, पुजारा, रहाणे, ये लोगों को तो तुम थोड़ा सेफ ही मानोगे टुवर्ड्स कैचिंग. फिर भी मतलब नहीं, आई एग्री, बट आप सोचो कोहली जितना अच्छा फील्डिंग करता है उस हिसाब से कैचेस बहुत छोड़ता है वो, बिकॉज ही इज अ जेन्युइनली गुड फील्डर. आप इफ यू सी वो मतलब लिमिटेड ओवर्स में वो लॉन्ग ऑन में चले जाता है स्लॉग ओवर्स में, बिकॉज ही इज गॉट अ रॉकेट आर्म, फ्लैट थ्रो, ही इज वेरी फास्ट.
So considering all that, because if अगर आप देखो पहले जमाने में जो ढीला फील्डर था वो ढीला फील्डर था most of the time, right? ऐसे बहुत कम थे जिनका रॉकेट आर्म है ये है लेकिन वो कैच नहीं करता अच्छा. So that's a little strange. And the other thing I think we discussed with Jamie also in our last podcast with Jamie Alter, कि एक चीज जो अभी है कि ये लोग स्पिन भी नहीं खेलते उतना अच्छा. ये जो करंट टीम है, I mean they struggle against even mediocre spin के साथ they struggle. I mean वो उस generation में जो Fab Five थे, they especially I would say that the best thing about those guys playing spin was they used to play risk free. I mean even Azharuddin, for a matter of fact, he was a really good player of spin. ये अभी क्या हो गया, T20 का impact है ना ज्वलिन, ये भी क्योंकि they don't like to play with soft hands because boundaries मारने हैं, right? तो maneuver नहीं करते strike, they push hard at the ball. So that's another reason why this India's slide right now in the first innings was also very surprising. मतलब all of a sudden 145 call out. हाँ ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ ये अचानक से? So yeah, definitely they are also struggling against spin. They are also not that great against spin as traditionally India has been. तो वो सीन तो रहा है, वो है तो सही है. And Joe Root को 5 विकेट दे दिए तुमने. हाँ. 8 रन पे. Joe Root, because do you remember after the first match, Flintoff or Vaughan किसी ने ही बोला था, I wonder what Joe Root's average would be had he played on these pitches all through his career. And उसके बाद से बेचारे का इधर की रन ही नहीं पा रहा, नजर लग गई है फुल अपनी उसकी. इनफैक्ट फ्लिंटॉफ ने तो अमिताभ बच्चन का वो रीट्वीट भी किया था ना, रूट को उखाड़ फेंकेंगे, 1-2 साल पुराना अमिताभ बच्चन का ट्वीट को रीट्वीट करके और उसके बाद से बेचारा कुछ नहीं हो पा रहा, रूट हो गया. Yeah. So I think I don't like ये कब से हुआ है मालूम है, जब शास्त्री कोच बना है या फिर then we become like you know cricketing power कि भाई इंडिया हो गया तो हम स्पिनिंग विकेट ही बनाएंगे. और स्पिनिंग मतलब कितना बेकार. पुणे वाला टेस्ट मैच करेक्ट we lost to Australia, it was a bad wicket, I mean to say, you know. So I think वो जो एटीट्यूड आ गया है ना कि हम लोग ऐसा ही पिच बनाएंगे जो बाहर वाला के न खेल पाए, that attitude won't work because it's not entertaining. मतलब चेन्नई वाला पिच जो सेकंड मैच हम जीते वो लकी थे, अगर टॉस हारते तो हम हार जाते थे वो मैच, 2-0 हो जाता था. I have a slightly different opinion. Go ahead Abhi. इतना स्पिन यार, लाइक मैं भी जाके विकेट ले लूं यार, मैं डालूंगा तो मुझे भी विकेट मिल जाएगा, ऐसा पिच बना दिया है उन लोगों ने. Go ahead Abhijit, you were saying something. So I honestly think that toss mattered way more in the first test than in the second test. For me, because completely agree. It was a very, like in the first test there was a huge difference in the pitches for the first 2 days than compared to later. But I would not say that was the thing in the second. The second, if you actually look at it, the second pitch kind of was like the third. Fun from day one. The second test match, fun from day one. Yeah. Fun from day one. तो अगर आप खराब बैटिंग करोगे उसके लिए तुम कितना पिच को कितना ब्लेम करते रह सकते हैं? But if everybody's completely agree, Abhijit. Absolutely agreed. And you know the other point I'll say is one thing I really like about Test cricket is हर कंट्री में एक पिच का अलग नेचर होता है. That is I think a beauty of Test cricket. Because you know a lot of people say कि नहीं फेयर विकेट बनाओ. अगर फेयर विकेट बनाओ, टेम्पलेट विकेट्स अगर पूरे सब जगह बना दोगे तो फिर होम एंड अवे का फायदा क्या है? फिर सारे पिचेस ही अगर एक ही होंगे, कहीं पे स्विंग होगा, कहीं पे सीम होगा, कहीं पे स्पिन होगा. I mean you have to adapt every. ये इंडिया इतने सालों से जब इंडिया का कोई पेसर ही नहीं होता था, तब जब ऑस्ट्रेलिया में जाके उनको भी ऐसे तो दिस लाइक वहां पे जाके वो लोग बोले कि आप लोग भी प्लीज थोड़ा सा स्पिनिंग ट्रैक बना दो ना, क्यों ऐसा नहीं हुआ ना. मतलब हाँ, तो वो लोग तो I have अपने they were playing to their strength. In fact that is what honestly that is what excites me about Test cricket कि यार सबका अलग अलग नेचर है. न्यूजीलैंड में अच्छा स्पंजी बाउंस होगा, पेस नहीं होगा उतना लेकिन स्विंग करेगा, स्पंजी बाउंस होगा. साउथ अफ्रीका में शार्प बाउंस होगा. ऑस्ट्रेलिया में तुमको सीम अच्छा बॉल को पटको तो सीम में पट गिर के. अभी दिक्कत क्या, अभी तो इंडिया कैन एक्चुअली at least at full strength इंडिया कैन मेक अ पेसी सीम पिच and they would be the ones to gain most. अगर शमी खेल रहा हो, अगर भुवनेश्वर कुमार, ईशांत शर्मा sorry बुमराह of course most importantly बुमराह शमी और भुवनेश्वर कुमार और ईशांत शर्मा, ये 4 है तो भैया तुम्हारा तो इनका तो they have the most to gain from a pacey track right now. Honestly, and अभी कैलकाटा का जो पिच रिले किया है ना, when Ganguly was the CAB president, कैलकाटा का विकेट इज वेरी गुड. टेस्ट मैच इंडिया खेलता नहीं है अभी, वहां काफी टाइम से खेला नहीं है, बट they have a really good wicket. उनका जो सेंटर विकेट है जो
it is a very very good wicket in the sense जो traditionally बोलते हैं ना, it'll have bounce first 2 दिन में अच्छा pace bowlers के लिए होगा, then बाद में spin करेगा. So it's actually a really good wicket. They should play some test matches in Calcutta. देखने को होगा, but मतलब everybody tries to have a home advantage. Everybody tries to do that. Yeah, I get it. Honestly speaking, 1.5 दिन में मैं I get that. वो मैं बोलता हूँ. 1.5 दिन में I am definitely not in favor of 1.5 दिन का टेस्ट मैचेस. 1.5 दिन का कोई नहीं बोलेगा, बट ये जेन्युइनली मुझे नहीं लग रहा उतना पिच का वो है जितना बैड बैटिंग है. मतलब दिस वाज लाइक इफ एवरीबॉडी प्लेज विद बैड एप्लीकेशन, तो मतलब वो तो फिर क्या बोलेंगे इतना. I didn't see in the from what I at least feel such vicious turn on the pitches at all. I did not see that. Last test में तो अहमदाबाद में तो उतना vicious turn था नहीं, बिल्कुल नहीं था. And miscalculation भी कर लिया ना इंग्लैंड ने. इन्होंने एक स्पिनर खिलाया. That was so stupid. वो क्यों किया उन्होंने? I think they went by a pink test match in general because वो, if you remember, वो last जो actually again they mistook Eden Gardens with the Ahmedabad pitch, right? Eden Gardens में अफगानिस्तान के साथ I think सारे विकेट स्पेसर्स नहीं, बांग्लादेश के साथ सारे विकेट स्पेसर्स ने लिए थे. तो उनको लगा चलो इंडिया में भी पिंक बॉल तो ऐसा ही होगा. But they didn't realize अहमदाबाद के पिच तो कभी भी फास्ट विकेट नहीं था. बट ये थोड़ा फनी नहीं लग रहा उनका? लास्ट उससे पिछला मैच में कंप्लेन ही रहा है, ये लोग स्पिनिंग ट्रैक्स बना रहे, इतना वो लोग रो रहे हैं. उसके बाद भी उन्होंने फिर स्पिनिंग ट्रैक्स बनाने के एटलीस्ट 2 तो लो तुम अपने. ये तो बिल्कुल ही मेरे को समझ ही नहीं आया क्या क्यों किया, क्या किया, how what was the वो behind it. I think they just went by the logic कि ping ball test है तो pacers को help मिलेगा, and let's just stack our bowling lineup with pace bowlers. और बैरिस्टो तो बेचारा इतना दूर आया 2-0 बनाने के लिए. मजा ही आया. बैरिस्टो is one person I don't like for some reason. First ball पे out हो गया वो. फर्स्ट बॉल पे आउट हो गया ना अक्षर पटेल के. हाँ. But अभी पसंद क्यों नहीं आपको? Like what is the reason why you don't like him? It's a very weird reason. He complains a lot about, जब भी उसका कुछ हुआ है ना, उसका बहुत complaining attitude लिखा मैंने आर्टिकल्स मतलब जो हमेशा लिखता है about how मतलब बहुत ही ज्यादा victim mentality वाला लगता है थोड़ा सा, बहुत ज्यादा मेरे साथ गलत हुआ है. प्लस एक बहुत ही गंदा रीजन है, बट वो उसकी ना मेरे को शक्ल थोड़ी पिकफोर्ड जैसी लगती है. जो एक पिकफोर्ड करके एवर्टन का कीपर है, तो उसकी शक्ल में कुछ जैसी लगती है जो मुझे बहुत ही गंदा लगता है. और उसका भी वो भी सेम वाइनी एटीट्यूड वाला ही है. तो मुझे पता नहीं, इसलिए मेरे को बैरिस्टो को ना देख के मुझे इट्स अ वेरी स्टूपिड रीजन, बट आई जस्ट डोंट लाइक हिम. उसका तो अभी कमेंट भी आया ना कि दे वर सेइंग कि वो टेस्ट मैच छोड़ के भी वो मतलब अभी वो आईपीएल खेलने आएगा एंड ऑल दैट. ही वाज सेइंग कि हम लोग आई एम नॉट रेगुलर इन ऑल 3 साइड्स, तो हम लोगों के लिए तो आईपीएल इज इम्पोर्टेंट. तो अगेन वो बेसिकली ही वाज सिंगिंग प्रेजेस ऑफ द आईपीएल अगेन, वर्ल्ड क्लास टूर्नामेंट. क्या बोलेंगे बेचारे ये लोग? अभी कुछ इंडिया के अगेंस्ट या बीसीसीआई के अगेंस्ट कुछ बोल ही नहीं सकते. इनके हाथ ही काट दिए, इनके पर काट दिए पूरे लोग. कुछ ये सोचेंगे ज्यादा कुछ बोलेंगे तो हमको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा अगले साल. कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, सीधा सीन हो जाएगा. फिर मोइन अली को मिल तो गया ना, जो भी उसने किया आखिरी में छक्के मार के उसको बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट तो मिल गया. फिर क्या चाहिए उसको? चेन्नई तो बैठी है कि कोई ऐसे 37 या 36 के प्लस हो तभी लेंगे उसको. तो चेन्नई डैड आर्मी सबका वो बना के एक्सपेंडेबल्स बना के मानेगी कि वो. बट आई थिंक वो लोग मोइन अली को दे माइट ट्राई हिम एज एन ओपनर बिकॉज़ उनका ओपनिंग तो अभी डामाडोल हो गया ना. शेन वॉटसन चला गया, मुरली विजय फेल्ड. आई थिंक दे विल पॉसिबली इंसर्ट हिम इन द टॉप ऑफ द ऑर्डर IPL. And Moeen Ali is decent. I would say he's decent. So he can. I definitely did not get him going back. Like for sure. Like absolutely. And Indian conditions में तो he can definitely T20 में 2 ओवर तो आराम से 4 if not 4 ओवर 2 ओवर तो दे ही देगा वो एज अ बॉलर भी. And Indians तो उसके साथ स्ट्रगल ही करते हैं. मोइन अली को तो खेल ही नहीं सकते इंडियन प्लेयर्स एनीवेज. मोइन अली ने लिया ना किसका, कोहली का तो मोइन अली ने ही तो लिया था ना. 4 8 विकेट लिए ना उसने टेस्ट मैच में. He got 8 wickets. So I was watching that auction live, correct? So Chennai tried to have Maxwell first. They couldn't because I think वो बहुत इसमें चला गया. So they wanted a spinner because they don't have a good spinner. So they wanted a spinning all-rounder or bowling all-rounder who can spin the ball. तो 2 ही option थे वो लोग के पास. They couldn't take Maxwell, so they had to take Moeen Ali. Foreign player ही चाहिए वो लोग को. But ये Maxwell की किस्मत वो लिखा के आया बंदा. मतलब कुछ करता नहीं है यार. वो 14 15 करोड़ लेके जाते हैं फ्री टाइम. ये आदमी क्या स्कैम मचा रहा है यार. ये क्या मजाक चल रहा है यार. इतने लोगों का कटा है फिर भी वो चले ही जा रहे हैं. I mean, he is laughing his way to the bank.
एवरी टाइम, मतलब 14 वो अभी तक वो एक सीजन में खेला है थोड़ा, वो भी वो इंडिया में नहीं, जो 2-3 गेम दुबई में हुई थी वहां पे उसने 2-3 50s मारे थे, उसके अलावा तो खेला ही नहीं है वो, एंड उसको एवरी टाइम लोग बेवकूफ बन रहे हैं, पता नहीं। पता नहीं, बट चलो फिर से हम आईपीएल पे आगे नहीं आईपीएल में नहीं करेंगे, आईपीएल का विल कीप द डिस्कशन फॉर सम टाइम एल्स। सो अभिजीत, आप I want to talk a little bit about your stand up, if that's okay. अच्छा, मेरे को लगा आप शेन वॉर्न वाला पूछोगे, बट नहीं, तो एक्चुअली शेन वॉर्न वाला उसमें आता, तो let's get into that because I was going to talk about that as well. नहीं, but you asked first what you were asking. So हाँ, नहीं ठीक, we'll go there again. हाँ, तो I had mentioned in my introduction of Abhijit that Abhijit is Shane Warne's nemesis. I don't know, Jolin, if you know that, you are aware of that. कपिल शर्मा का पता है, शेन वॉर्न का नहीं पता। शेन वॉर्न का भी सुनो, so Abhijit is going to tell us the story. ऐसा कोई अभिजीत थोड़ा बैकग्राउंड देना, उसके बाद आप बताना। हाँ, ऐसा कोई नेमेसिस सीन नहीं है यार, उसकी लाइफ में मैं कितना ही मैटर करता हूँ शेन वॉर्न की जिंदगी में, बट तो बेसिकली ये हुआ कि ऑस्ट्रेलिया वाला जो सीरीज चल रहा था उसको तो पागलों की तरह फॉलो तो मतलब ऐसे रात भर ऐसे करके देख ही रहे थे, एंड नटराजन व्हाइल बॉलिंग इन हिज, मतलब एंड नटराजन के लिए एक तो सॉफ्ट कॉर्नर भी जा रहा था, बिकॉज it was almost like the universe has conspired somehow to give Natarajan a chance कि किसी तरह से उसको मैच में आ जाए, नटराजन आया, and it's very understandable for a person who's trying to his first time a pacer who sometimes try to give too much, so उसने काफी no balls किए थे where he had overstepped and no ball किए थे, and Shane Warne had said it in his in the broadcast, isn't it interesting that Natarajan bowled 5 no balls all on the first delivery of the over, like of 8 no balls he bowled, 5 of them were in the first delivery of the over, basically implying kind of spot fixing. Somebody asked him also, like, are you trying to say imply something? No, I'm just saying it's a little interesting that he did that. That was the Fox का जो coverage में उसने बोला था, interesting. So implying that Natarajan did spot fixing, which I genuinely, मतलब मैं पढ़ा था और मतलब but एक तो रात को बैठ के 1 बजे बैठ के तुम आर्टिकल पढ़ रहे हो, तुम्हारा भी दिमाग खराब हो रहा होता है कि what the fuck, I need to stand up for players, तो वो वाला सीन हो रहा था, तो which was, it just seemed in such bad taste for anybody to be saying that वो debutant पहली बार अपना वो bowling कर रहा है, and it's very natural कि यार कोई मतलब कोई bowling करता है यार, अगर you are trying to fast bowlers के लिए तो no ball रहता ही हमेशा सीन, तो वो करने की कोशिश कर रहे हैं, and for a person of Shane Warne's stature, हाँ stature, कोई छोटा player कोई बोल दिया, Shane Warne who is like the most successful Australian bowler basically, so with most of, so for him to be saying that, it just felt sounded very petty, right? Very petty, very मतलब not classy at all, like it was very petty. So तो उसको मैं मतलब फिर मैं वो ट्वीट किया था कि this is just ridiculous for Shane Warne to be saying that, and while tagging him on Twitter for implying what he is implying, it's just classless. And उसके बाद which उसने कुछ किया नहीं, and he ignored, and next day Mitchell Starc comes and Mitchell Starc pulls a fucking big no ball, like इतना बड़ा, मतलब almost 1 feet उसका पैर आगे था, तो उसका मैं पीछे पिक्चर लेके फिर से शेन वॉर्न को किया, हे शेन वॉर्न, isn't it interesting in it that Mitchell Starc is bowling such no balls, उसके बाद उसने मुझे ब्लॉक कर दिया कि fuck off. तो वही वाला है, which honestly I understand in his position also कि कोई साला फालतू में बके जा रहे तो वो उसका ब्लॉक करना भी वाजिब है, तो उसमें कोई स्ट्रेस नहीं, but yeah, that was very funny to me because आप सोचो, I mean Abhijit, I mean you have a lot of followers, अगर आप if you keep worrying about every comment और सबको ब्लॉक करते रहो तो आप वही करते रह जाओगे. So that was very funny to me that Shane Warne would block you. Yeah, and I understand his position of blocking me as well, but I mean मेरे को जो लग रहा था तब मैं वो कर रहा था कि मतलब भाई ऐसे कैसे नटराजन पे ऐसे कोई बोल रहा है और इतना बेचारे को इतना चांस किया, इतनी देर से वो रहा हुआ है, नेट बॉलिंग के लिए गया था, लगा हुआ है,
सब कुछ देखे जा रहा है वहां पे, बच्चा हो गया उसका यहाँ पर एक, उसके किसी को फिक्र नहीं है, विराट कोहली के बच्चे को पूरा देश ऐसे सेलिब्रेट कर रहा है, तो वो उसको जाके चांस मिला, तो इसीलिए वो वाला थोड़ा सा मेरा इमोशनल रिएक्शन भी आ गया, बट या दैट्स व्हाट हैपेंड विद द शेन वॉर्न थिंग, yeah, it's okay. Very That reinstates my belief, correct, Australian sports culture, because they don't take it nicely. I mean to say, what you did was right, correct. क्या मतलब तुम बोल रहे हो नटराजन के बारे में, and someone is telling about your own bowler, but he couldn't take it, correct. तो वैसे ही है वो लोग, कोई अच्छा नहीं है उसमें, कोई दूध का धुला हुआ नहीं है, that I can tell you. Everyone from Hayden to Ponting to anyone, like Michael Clark, one of the very, I hate that guy, like as a captain, as a player, and he scored 300 against India. But anyway, I mean, all Australians are the same. Michael Clark, No, you man. hate that guy. That's a Yeah. I used to love to watch Michael Clark bat. Not about his even like batting. So, minus batting, correct? You see the way he speaks against Indian players. I mean, he's Not as now, bad as not I think. anymore, though. Not anymore. Even when the sandpaper thing happened, he was like, I am willing to come out of my retirement to lead India Australia. अबे तुझे पूछ कौन रहा है? ये कैसा so such a black of woe, but Pakistani cricketer kind of a statement कि मैं वापस आ जाऊंगा रिटायरमेंट से, भाई तुझे बात कौन कर रहा है, तू अपने आप को यहाँ पे इम्पोर्टेंट बना रहा है, तो he does have his favors, but all of them only, Ricky Ponting with his line, this famous Australian line that we won't cross, and everything, they have been nasty. माइकल क्लार्क, रिकी पॉन्टिंग का तो पता ही लग गया था ना सिडनी टेस्ट मैच में 2008 में क्या किया था उन लोगों ने. I mean, that was an indicator. But again, all said and done, I Australian, have, of course, their issues, but their Australian over the years, I have loved to watch Australia though. Of course, just because it's box office. It's proper box office. They're box office for sure. Absolute box office. So again, that's something. It's one of the most fun things to watch for sure. Australia, any clash where Australia ends up losing. I honestly, everybody on Twitter and everybody was going gaga about that test, that series on Amazon Prime. It was a complete PR job, and how could people not see through it was insane to me. Like, how can you not see that जबरदस्ती आपको अच्छा फील कराने की कोशिश कर रहे हैं लोगों के बारे में. Timing was the indicator as well, right? क्या एकदम मतलब ये तो क्लियर PR जॉब है यार, ये कैसे नहीं दिख रहा है, ये तो समझ, ये तो बेसिकली तो वही, सॉरी फॉर गोइंग इनटू दैट, बट वो अक्षय कुमार का मोदी इंटरव्यू कि आम कैसे लगता है आपको, ऑलमोस्ट ये तो दिख ही रहा है, कैसे समझ कैसे नहीं आ रहा है यार, ये तो ऑब्वियस है. एवरीबॉडी वाज आल्सो लाइक नो टेस्ट वाज वेरी गुड, हाउ वाज सब उसमें विलेन दिखा रहे हैं, जो भी ऑस्ट्रेलिया सब विलेन, सब बुरे, नहीं तुम ही बस अच्छे. So अभिजीत, आपको मेरा I'm willing to bet some money, आपको नेक्स्ट ब्लॉक करेगा माइकल वॉन, मुझे लगता है. नहीं माइकल वॉन, यार माइकल वॉन को मैं पहली बात तो मैं शेन वॉन के बाद थोड़ा सीखा हूँ. अब मैं उतना एकदम ही कुछ ऐसा बोल, मतलब थोड़ा आराम से एक तो मुझे ये समझ नहीं आता, क्योंकि ट्विटर पे ना ये भी बहुत होता है कि मतलब मुझे बड़ा बुरा ही लगता है यार, ब्लॉक होना तो बुरा लगता है ना, किसी कोई बेसिकली तुम्हें फक ऑफ बोल रहा है यार, तो इसलिए इसमें अच्छी बात तो नहीं है. तो मैं माइकल वॉन से ब्लॉक तो नहीं होना चाहता, बट मैं वो करके हो रहा है. एंड ऑनेस्टली माइकल वॉन का स्टैंड भी मुझे समझ आता है, वो बहुत बार उंगली करता है, जानबूझ के उंगली करता है, वो मजे ले रहा है और उंगली करता है. एंड आई विल टेल यू, जो सबसे ज्यादा हल्ला मचाया लोगों ने कि जिन लोगों ने बोला था इंडिया हार जाएगा, उनको दे कॉल्ड इट आउट. बट ऑनेस्टली हम लोगों ने पॉडकास्ट किया था, माय प्रेडिक्शन वाज इंडिया वाज गोइंग टू लूज 4-0. इफ इंडिया लूजेस इन एडिलेड, माय प्रेडिक्शन वाज आल्सो इंडिया इज लूजिंग 4-0 in Australia. See, it was a great story that so all these white people predicting 4-0 and then India won. But please, after the first match, after the 36 all out, everybody felt the same thing. बहुत ही कम ऐसा ऑप्टिमिज्म होगा कि उसके बाद कोई 3-1 बोल दे, और कौन ही बोला होगा यार. नहीं, आपको बोल रहा हूँ ना, ज्वलिन ने प्रेडिक्ट किया था, he had said 2-1 India is going to win and India won 2-1. You had said that? He had said, yeah, हमारा podcast भी है, if you go there you'll see, I had said India loses 4-0. If India loses in Adelaide, India loses 4-0. And Jolin का prediction was 2-1 India. And उसका रीजन भी है. Yeah, रीजन भी है because Kohli वापस जा रहा था ना, that was the reason. Because I currently think Kohli, see that's personal opinion. See, we don't want to go there, but Kohli should have gone before the first test match. Okay,
see, you're going back. Now you're putting, you're playing first test match and going away. You're like, I personally did not like Kohli staying for the first test match. So Rane should have captained all four. So because of that, I said probably anyway, जो first test में होगा, शायद जीत जाता था इंडिया. ऐसा मुझे लग रहा था. But 2-1 was the score line I was predicting after that, and I think I was lucky, but I thought we got lucky in last test match, but Sydney वाले भी जीत जाते थे अगर पंत खेलता था तो 3-1 होता था actually. So ठीक है. बार-बार 3-1 मेरे मुंह से 3-1 निकल जाते हैं, but मैं ये पूछना चाहूंगा कि why according to you Kohli should have left before the first test? Like I mean technically he's India's best batsman, so उसको जितनी भी देर रह सकता है वो अच्छी बात है. हाँ exactly. हाँ तो मैं बताता हूँ. तो मैंने भी वही बोला पॉडकास्ट. मेरा लॉजिक क्रिकेटिंग लॉजिक नहीं है. See, basically Kohli has become like bigger than game now because of his PR and so on and so forth. Correct? तो pressure क्या होता है? We talk about Kohli's becoming a father, correct, and not about other players. So you have that kind of persona. So कैसा होता है बाकी सब players अलग, like you see, it's a team game, correct? Kohli अकेले कुछ नहीं कर सकता in cricket. He's just a captain. He's a very good player. But now because of Kohli, even Australian media is focused on Kohli, correct? तो बाकी सबके ऊपर undue pressure आता है. Like राणे, मतलब सब लोग मजाक कर रहे थे कि अभी राणे कैसे कर पाएगा? How would he? अगर किसी पे फोकस ज्यादा रहेगा तो बाकियों पे तो प्रेशर हट जाना चाहिए, नहीं? हट जाना चाहिए ना, बट वो कैसा हो रहा था फर्स्ट में वो था, बाकी 3 में नहीं था. अगर वो पहला एक तो हार के गया, कितना प्रेशर हुआ रहेगा सोचो राणे के ऊपर. I'll tell you, Jwalin, वो इंडिया हार गया because of that, that 1 hour bad 1 hour India had. अगर इंडिया जीतता तो कोई ये बात बोलता नहीं. And I firmly believe that India, I mean, any team should play their best team. And if your best batsman is available, you should be playing him. I mean, no matter what. Honestly, I would even like see, there's a clear Kohli Rohit Sharma का कुछ तो सीन है उनका, वो तो दिखता ही है. वो तो दिखता ही, वो हग भी करने जाते हैं, ऐसे लगता है कि समधी जो जिनका टूट गया वो लोग मिल रहे एक दूसरे से. बट बिकॉज यार the first match started, the backdrop of Rohit Sharma's injury and the lack of information given to him about that was also very weird. कि यार बताया ही नहीं जा रहा कि वो खेलेगा नहीं खेलेगा. आईपीएल में वो खेल रहा है, फिर उसके बाद वो उसका मतलब ना T20 ना ओडीआई ना कुछ, तो मतलब it was a fiasco. It was a huge fiasco. Yeah, it was a huge fiasco. And honestly कोहली के बाद कोहली अगर नहीं है तो रोहित शर्मा भी नहीं होना बहुत बड़ी बात है, कि दोनों ही हमारे इंडिया के बेस्ट बैट्समैन वो नहीं होना. So it's a I think test match में शायद रोहित शर्मा का उतना इम्पैक्ट नहीं, बट कोहली तो भैया he walks into any side. I mean वो जब खेलता है कोहली, if you look at it, Adelaide test match का best innings भी कोहली नहीं खेला था. Yeah, true. That is true. He played the best innings of the Adelaide test match. For people, I mean, who mostly follow a lot of test cricket, everybody knows that कोहली के बाद अगर कोई इंपॉर्टेंस में है तो पुजारा. इनफैक्ट कोहली से ज्यादा भी बोल सकता हूँ मैं पुजारा कोहली से ज्यादा इंपॉर्टेंट भी बोल सकता हूँ टेस्ट में. बट अगर परसेप्शन वाइज देखा जाए इंडिया के बेस्ट 2 बैट्समैन तो मतलब वो कोहली और रोहित शर्मा को ही माना जाता है ना हर चीज में. एंड रोहित शर्मा ऑल्सो हैज दैट लिटिल बिट ऑफ अ थिंग, दैट वीरेंद्र सहवाग फीलिंग दैट on a day he can just take the match away from opposition like crazy. Like वो एक 2 सेशन में आपको खत्म कर सकता है, पूरा खत्म कर दिया उसने बस, मतलब वो वाला. I am a big fan of Rohit Sharma in one day, but टेस्ट में मुझे लगता है, and मैंने तो प्रेडिक्ट किया था ज्वलिन, if you remember, मैंने बोला था प्रॉब्लम यही होगा कि ऑस्ट्रेलिया में वो रन नहीं बनाएगा एज एन ओपनर. That's exactly what happened. इंग्लैंड आएगा, इंडियन पिचेस में वो बना देगा रन. इसका फिर क्या होगा, इंडिया जो न्यूजीलैंड जाएगा, साउथ अफ्रीका जाएगा, उसमें वो ओपनर खेलेगा एंड वहां पर रोहित शर्मा का सबसे बड़ा दुश्मन मुझे तो लगता है रोहित शर्मा ही है. रोहित शर्मा के ना विकेट के ना 1 ओवर या 1.5 ओवर 2 ओवर से पहले ना आप देख सकते हो कि उसका विकेट जाने वाला है. वो खुद बोर हो जाता है बहुत बढ़िया शॉट खेल के. उसका लिटरली दिखता है कि अगले 2 ओवर में जाने वाला है. ही गेट्स बोर्ड ऑफ प्लेइंग ग्रेट शॉट्स. एंड वो आउट भी जो हुआ था सिडनी में हुआ था, या बेकार जो उठा के मारा बॉल को अननेसेसरीली. एक शॉट पहले चौका लिया है, तू वो क्या किया उसने कुछ समझ ही नहीं. सुनील गावस्कर तो ऑलमोस्ट गाली देने लग गया था कमेंट्री में. सुनील गावस्कर गॉट रियली मैड. लाइक ही थ्रो अवे हिज विकेट, ऐसे करके डांटने ही लग गया था. सो Rohit Sharma, I would say that, see, Rohit Sharma also, with all due respect, like for people who had been in Australia for 1 month and a half,
you getting used to the Australian pitches and all is very different from Rohit Sharma just coming for the last 2 tests. वो कितना खेल पाएगा उसको settle down में. तो considering that he did fine in Australia also for me, and India में तो वो खैर है ही वो बाप है. तो मतलब on merit I would think that Rohit Sharma deserves to be the opener for sure for India in Test, because रोहित शर्मा तो पक्का है ही. बाकी दूसरा कौन है? शुभमन गिल भी अभी बहुत बढ़िया निकला है, बट और उसके लिए बुरा लग रहा है अग्रवाल के लिए कि बेचारा शुभमन गिल को चांस मिला और उसको तो अब मिलने ही नहीं वाला. शुभमन गिल तो लग रहा है चिपक जाएगा पूरा इससे. नहीं, शुभमन गिल लुक्स रियली गुड. आई मीन उसका जो बैटिंग ऑस्ट्रेलिया में देखा, इतना कंफर्टेबल बैटिंग एंड इतना एंड क्लास है उसमें. और खेलता क्या है वो. उसने जो मिशेल स्टार्क को जो 6 लगाया था लास्ट टेस्ट मैच में गैबा में, he was one of the best shots of the series. Do you feel he has a very मुझे पता नहीं पाकिस्तानी क्रिकेटर स्टाइल उसका बहुत ज्यादा लगता है. Like he has a very पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो डोमिनेट करते थे ना, बहुत ही I'll tell you, especially जो wristy batting ना, जैसे वो लेफ्ट साइड में जैसे खेलता है, टच ऑफ लक्ष्मण, टच ऑफ यूसुफ योहाना और वो इंजमाम जैसे खेलते थे, very risky, and he looks really good. उसका सिर्फ एक जो टेक्निकल जो उसका प्रॉब्लम, आई डोंट नो इफ यू गाइस नोटिस्ड, वो जब ऑफ साइड में खेलता है ना, थोड़ा शॉर्टिश बॉल, वो थोड़ा पुश करता है बॉल को, मतलब ऐसे बॉडी से दूर खेलता है थोड़ा. आई थिंक दैट इज वन एरिया ही पॉसिबली नीड्स टू वर्क ऑन, बट he looks very classy. I just hope he becomes our next big batsman. But is Jwalin, are you of the opinion Kohli should not be the captain of India in Test? Please don't tell me you are. Yeah, so I would like to have someone else as a captain, not Kohli, at least in Test match. Yeah. But what is the reason? What is the reason? कैसे बोल सकते हो? सबसे consistent आदमी यार. You can explain कर Jwalin. See, मैं वैसे भी वो निकल जाएगा, देख लेना. Because see, the problem is, इतना अच्छा प्लेयर है, इतना अच्छा बैट्समैन है. I think उसका कैप्टनसी हेल्प कर रहा है उसकी बैटिंग को अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम. बट ऐसा पॉइंट आएगा करियर में where I think it will start impacting his batting, which I don't want. Right now it is complementing. यार पूरे वो तो कभी ना कभी तो किसी का फॉर्म जाएगा. हाइपोथेटिकल के बेसिस पे थोड़ी ना हटा सकते हैं यार. मतलब उस पे हो गया अभी, उसने सब पिनेकल देख लिया. वैसे भी वो 33 34 का हुआ है, वो 1-2 साल में वैसे भी चला जाएगा. बट आई जस्ट डोंट गेट कोहली कैसे जाएगा 1-2 साल में? उसका फिटनेस देखा है तूने? वो खेले तो ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, कैप्टनशिप जाएगी उसकी, मैं बोलता हूँ कैप्टनशिप जाएगी उसकी, देख लेना. कौन लेगा? कौन Who will be the captain? रोहित ही लेगा, और कौन लेगा? रोहित ही लेगा यार. रोहित पहले खुद तो कंसिस्टेंटली हो जाए, मतलब रोहित देख लेना. I mean it is almost like कुछ ना कुछ तो होगा. I'm telling you, ऑस्ट्रेलिया में फियास्को होते होते रह गया. We won the series, but कभी ना कभी ऐसा डिजास्टर होगा एक सीरीज में और वो चेंज हो जाएगा. But I generally feel this a lot that कोहली का ना कुछ भी एक छोटा भी गलत होता है ना, this lot of people are waiting for like that to happen, because it's insane. He has the best success ratio wise, he has the best. For obviously Rahane के 3 matches में नहीं गिरने वाला, but for people who have captained for number of matches, he has the best captaincy ratio. Then this huge disrespect that going to his name for him to be questioned so much. देखो, और रहाणे को ठीक है मिला है उसने, but you have to realize, I mean ये टीम तो कोहली का ही है ना यार. कोहली ने खड़ा किया सब. तो रहाणे ने खेला ठीक है, he did good, but कोहली का टीम है ये. And people लोग बहुत ऐसा भी बोलते हैं कि नहीं धोनी ने हैंड ओवर किया था, कोहली ने. अरे 6th इंडिया टेस्ट रैंकिंग में यार, कैसी बात कर रहे हो? जब उसने when he took over reins, India was 6th in ranking, उससे लेके वो ले आया. So this I absolutely agree with you. This is very much Kohli's team, and Kohli has a great ratio and record. जो भी बोलो, अब I understand कोहली के जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया में जीती इंडिया, but that this resolve and this fight and this everything, it is definitely trickling down a lot from Kohli's approach and attitude also. तो ये तो बोलना ही नहीं चाहिए कि कोहली को. नहीं मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ. Okay, so I think okay, so my point is not because we are not losing because of Kohli, or so everything is like कोहली का ही impact है टीम के ऊपर. What I mean trying to say is जैसे धोनी मर के गया, correct, like he was not in his prime. I think I want Kohli to retire or probably at least get out of captaincy when he's in prime. I don't want him to go like ये सब हो गया है फिर हारते जा. If when Kohli will be past his prime, Rohit Sharma would have retired twice. Kohli his fitness level Kohli का ऐसा है कि 40 तक उसका कुछ रोहित शर्मा का जो अभी है वो 40 तक वो लगेगा. धोनी के साथ you cannot compare यार. He averaged 37 as a captain. And then he was not even winning test matches, right? बाहर हार रहा था. Kohli averages more than 50 as a captain and he's won the maximum test matches. किस basis पे हटाएंगे? Basis तो बताओ ना हटाने का.
हटाते कब है हाँ कैप्टन? मतलब अभी नहीं बोल रहा हूँ, इमीडिएटली नहीं बोल रहा हूँ, व्हाट आई एम सेइंग इवेंचुअली वो ट्रांजिशन करेगा तो अच्छा है, विद इन ईयर और सो, इमीडिएटली तो हटा ही नहीं but I'll सकते। tell you, अगर ट्रांजिशन करेगा then he should transition to a young guy, right? ट्रांजिशन करता है तो फिर शर्मा को करके क्या फायदा है? तो वाइस कैप्टन बनाओ ना अच्छे को, कोई केएल राहुल को बनाओ या किसी को बनाओ, फिर तुम रोहित को क्यों बना रहे हो वाइस कैप्टन? उसका प्लेस तो पहले कंफर्म होने दो राहुल का। राहुल तो टीम में ही नहीं है। अनलकी है बेचारा। बोलने लग जा रहे कि टेस्ट में उसको चांस दो, इतना साल तो उसको चांस दिया टेस्ट में, इतना अगर लोग भूल, मतलब पता नहीं आईपीएल के बाद ही, मतलब केएल राहुल तो है ही, मतलब केएल राहुल को तो मुझे नहीं लगता टेस्ट में वापस चांस देना चाहिए, अनलेस शुभमन गिल या अग्रवाल कुछ कर। अभिजीत देखो, रोहित शर्मा को भी तो बहुत चांस मिला है भाई, तो इसलिए राहुल आई थिंक आल्सो डिजर्व द चांस। बट रोहित शर्मा को चांस मिला है, उसके बाद वो फेल होके उसको टीम से निकाल भी दिया गया है, सो उसका चांस देने बंद भी हो गया था उसका। बट आ भी गया ना वापस, आप देखो अब आ तो गया। हाँ, but Rohit Sharma had to wait for the openers to again fail for him to get his second chance. Like he got sustained amount of chances for one, वो पूरा टाइम आता था रोहित शर्मा का टैलेंट आएगा, रोहित शर्मा का टैलेंट दिखेगा, वो वेट कर करके थक गए। बट उसके बाद ये सारे बहुत सालों तक तो इन लोगों ने ही खेला ना, अब जाके उसको ऑलमोस्ट उसका करियर तो ओडीआई में तो वो कब से बाप बना बैठा है, वो अब जाके उसको चांस मिला है आफ्टर पीपल। नहीं बट आई वन थिंग यू विल एग्री, इवन वनडे में उसको तो वो तो 2013 के बाद से वो चला, राइट? उसको 2008 से वो 5 साल खेला था विदाउट डूइंग एनीथिंग बिग। वो पूरा अपना वो पोटेंशियल पे खेला था 5 साल। बट ही इज वन ऑफ द फ्यू लकी पीपल जिसको पोटेंशियल पे 5 साल मिले। आई मीन इफ यू सी देयर आर लॉट ऑफ अदर प्लेयर्स जिनको नहीं मिला इतना टाइम जितना उसको मिला। आई मीन ही बिकेम सक्सेसफुल आफ्टर प्लेइंग फॉर 5 years फॉर इंडिया। So that is a big deal. He has been one of the biggest Rohit Sharma supporters. He used to keep saying Rohit Sharma definitely deserves a chance, and he's our best, one of our best batsmen. He deserves a chance in Test. So he was. It's also a little weird for me that Kohli के इतने statements positive towards Rohit Sharma, इतना backing him है, और Rohit Sharma का कभी एक शब्द भी नहीं आया towards Kohli or something like that. तो वो obviously अब वो कहीं ना कहीं तो वो थोड़ा सा rift आएगा ही, थोड़ा सा। I think वो best batsman दोनों। But you know, this is what is amazing to me, that वो 5 जब Fab 4 and Sehwag used to play, I mean they played so well together यार। I mean मतलब वो उस लेवल के and अभी जैसे अभी कोहली का सुपरस्टार स्टारडम इज इन अ डिफरेंट लेवल, उसके आसपास भी कोई नहीं। वहां पे भी सचिन का ज्यादा था, बट देन सौरभ एंड द्रविड वर प्रीटी क्लोज टू सचिन। यू नो सचिन अगर एक पे है तो ये लोग सपोज थर्ड लेवल पे तो है ये लोग, मतलब इवन देन दे वर्कड वेरी वेल टुगेदर। आई मीन दैट अगेन आई थिंक सौरभ गांगुली मैनेज दैट टीम रियली वेल। मतलब इतने सुपरस्टार्स के साथ उसको मैनेज करना was not that's also a little advantageous to Saurav Ganguly, that was slightly easier for Saurav Ganguly because he was not the superstar, like because Kohli's situation mein he is the superstardom, Bollywood, married into Bollywood, kid whose life will be very focused on, although they seem like बहुत ही sorted लोग लगते हैं, otherwise Kohli and Anushka give a very normal sorted people vibe, but there's just a lot of focus on it, on them. So गांगुली के साथ वो नहीं था, एटलीस्ट गांगुली के साथ तो सचिन दूसरा इंसान था, तो उसके ऊपर इतना ज्यादा नहीं बट प्रेशर नहीं था, बट ही हैड टू मैनेज लॉट ऑफ। सो आप सोचो इतने मतलब ऐसे, कैन यू इमेजिन इस टीम में कोहली जब कैप्टन नहीं रहेगा एंड इफ अ यंग पर्सन बिकम्स अ कैप्टन, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी टू मैनेज दैट। एंड सौरभ गांगुली हैड टू मैनेज कुंबले, सचिन, द्रविड, श्रीनाथ at one point of time. No, I'm saying something. I'm saying that managing the fact that you have a superstar in your team and managing others' jealousy from that person or other feeling less important from that person is different. You are yourself that person. That you are yourself the person that everybody is jealous of and everything. Of course. Because उसमें तुम कितना ही manage कर पाओगे? मतलब कोहली के लिए कोहली के manage, मतलब ये कोहली में मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होगा, बिकॉज वो खुद ही है जिससे लोग को लग रहा है कि भाई बहुत ज्यादा फोकस है, तो क्या ही मैनेज करेगा इसमें। तो चाहे वो जितना भी वो हो जाए, he would be seen in a different light. So it's but just out of the sheer fact his records, as long as winning percentage wise and everything is on, and जब तक रहाणे with all due respect to him seems great, but अपना खुद इतना consistent रन तो होना पड़ेगा। तो मतलब तो उसके बिना कैसे ही तुम मान सकते हो उसके जगह। अभी ऑनेस्टली अगर कोहली का थोड़ा खराब भी हो,
अगेन एज इज नॉट ऑन दिस साइड, बट लगता है अश्विन कैप्टन फिर भी बढ़िया बन सकता है। अश्विन का बहुत सही सीन होगा, बट रोहित शर्मा भी मुझे तो टेस्ट क्रिकेट में थोड़ा परमानेंस तो आना पड़ेगा, फिर जाके कोई सोच भी सकता है कि रोहित शर्मा को and honestly Abhijit and Jwalin, I think तो रोहित शर्मा को टेस्ट में कैप्टन बनने के लिए he has to perform abroad. वो सिर्फ इंडिया में रन बना के नहीं होगा वो। At a consistent level also. For a year or two, he has to be at some level for that thing also. अब्रॉड खेलना पड़ेगा, क्योंकि इंडियन पिचेस में कितना भी बना लो रन, देखो ऑनेस्टली जो इंडिया में ग्रेट प्लेयर्स बने हैं वो तो टेस्ट मैच में तो खैर अब्रॉड रन्स बना के ही बने, राइट? होम में तो काफी लोगों ने खेला है, वो तो है। you score abroad, you're not going to be considered. So again, so perfect segue into, I think, one of the best observational jokes, if not the best, on cricket. And Jwalin, I don't know if have you had a chance to hear that joke? नहीं. So Abhijit, again, I know this is not the right thing to do, because सबको जैसे सिंगर को बोलते हैं सब लोग गाना गाओ. Can I request you to just maybe short में आप वो joke थोड़ा बता दो, then I want to get into the whole discussion. So the joke is basically about it's a bit on my elder brother. It's a bit on elder brother, like basically elder brother, how elder brothers and younger siblings में हमेशा बड़ा भाई मतलब का सीन रहता है, बड़ा का वो. So I was just saying this, and in terms of that I say that all Indian basically all Indian successful bowlers, they have always been younger brothers. So that was the joke. Honestly, I have not done this joke for like ages now, and I have not even talked about it. So मेरे को खुद भी अभी याद अचानक से पहले बोला होता अभिषेक ने, तो मैं वो बिट देख लेता अपने आप को याद करने के लिए. But so Javgal Srinath, Zahir Khan, so all of them have been young. Yeah. Kumble as well. Kumble, yeah, all have been younger brothers. So that's when I get to. Do you realize how weird it is that India's bowling strength depends on the fact that बड़ा भाई कभी बैटिंग करने ही नहीं देगा. So it was a fabulous joke, and I remember distinctly मैंने आपका वीडियो देखा था, and again हमको तो मालूम नहीं था how everything is going to transpire, right? मैंने वो कपिल शर्मा के शो में वो जोक देखा, and I was like, what the hell यार, ये तो blatantly ये लोग इनके राइटर्स चुरा रहे हैं, and उसके बाद आपका वीडियो आया. और सबसे बुरा ये भी लगा था, उन्होंने वो जोक करा भी बड़े खराब तरीके से था. पहली बात तो उठाया था, और वो इतने खराब तरीके से था ना, मतलब वो पॉइंट ही प्रूव नहीं हुआ कि क्या है क्या नहीं है, वो क्या हुआ. So that was तो honest, and that was वो full PP live वाला सीन था. मैंने एक ब्लॉग पोस्ट डाला था, वो ब्लॉग पोस्ट को ज्यादा शेयर हो गया, और तब वो एक्चुअली तो मतलब उतना किसी को प्लेजरिज्म से फर्क भी नहीं पड़ता है इंडिया में, तो मतलब काफी तो उठाया चोरी जाते हैं. बट अभी तब वो ना एक नैरेटिव चल ही रहा था अबाउट हाउ कपिल शर्मा इज अ बैड ह्यूमन बीइंग. वो कपिल शर्मा का सुनील ग्रोवर वाला भी इंसिडेंट आया था कि उस पे फ्लाइट पे लड़ाई हुई थी, रूमर्स चल रहे थे कि जूता फेंका था, कुछ था, वो भी चल रहा था, अल्कोहल का भी कुछ चल रहा था. तो दैट नैरेटिव वाज ऑलरेडी देयर, दैट कपिल शर्मा का बुरा वाला चल रहा था. सो ये उसमें ऐड हो गया, एंड दिस बिकेम सडनली अ टॉक ऑफ द टाउन विद लॉट ऑफ न्यूज, एवरीथिंग अराउंड इट. तो बिल्कुल ही नत्था पेपर में, न्यूज में सब जगह आ गया भाई. हाँ, तो पूरा नत्था वाला फीलिंग भी आ गया कि काफी ज्यादा ही वो हो रहा था. तो देन फॉर 5 days दैट क्रेजीनेस हैपेंड, एंड वो पूरा क्रेजीनेस चल रहा था. सो आई हैड अ स्पॉट, तो आई जस्ट डिड अ स्पॉट, एंड वो रिकॉर्ड किया अबाउट दैट क्रेजीनेस, एंड वो बिट भी ठीक है, तो उसका उस बिट को भी डाल दिया मैं कि भाई फिर करके ये जो हो रहा है वो सुपर फनी. एंड आई रिमेंबर दैट पर्टिकुलर पंचलाइन जो आपने बोला था ना कि कपिल शर्मा एंड टीम कॉट प्लेजराइजिंग, तो सम फैंस हैड रिस्पोंडेड कि कपिल को तो प्लेग है ही नहीं, आप कैसे बोल रहे हो? So that was yeah, that's also a thing. No, any fans of anything, the easiest way is that Ian लगा दो. So कपिल के फैंस सारे कपिलियंस थे, तो बहुत गाली वाली दे रहे थे मुझे ट्विटर पे. तो वही उस पे भी फिर कंटेंट निकलता रहा, पूरा सब कुछ जो भी गालियां वालियां चल रहा था. But it was a funny phase, but yeah. But Abhijit, you don't have to worry. We are also Gangulians, so आपको पूरा support है हमारे तरफ से. Thank you. Yes, amazing. Oh man, that was good. So tell me something. तो आपने बात थोड़ा सा छेड़ा उसमें, तो आप लोग इतना original content बनाते हो, but how do you deal with things like these, right? I mean, India में, because India में, like you said, I think plagiarism का तो कोई मतलब कैसे रोकोगे? How do you stop things like this? It's very sad. It's very sad, honestly speaking. And I might just get a little more serious about it. It's very sad because
एक ना नेहरा के इंटरव्यू में, नेहरा अपना रिटायरमेंट के वक्त ना उसने एक इंटरव्यू में बहुत बढ़िया चीज बोली थी, इंडिया इज नॉट अ स्किल लविंग नेशन, इंडिया इज अ स्टार लविंग नेशन। ये नेहरा, आशीष नेहरा ने बोली थी, बहुत ही बढ़िया बात कही थी। तो एक्चुअली और वो अब और ज्यादा बढ़ गया है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, लाइक जोक्स बीइंग लिफ्टेड, जोक्स इधर उधर से करना, एंड honestly it leads to a lot of bridges being burnt when you know that is lifted, but उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। it's something that as comics अब मेरे को almost ये कि अब you have to just be fine with it कि ये होने वाला है, कि jokes आपके उठाए जाएंगे और वो होने ही वाला है, but it's very sad thing, it's very annoying also, but वो होता रहता है। और अब जितना, because again stand up is getting like crazy, अब तो पहले का वो टाइम अलग था कि everybody was just doing it for that। अभी तो ये भी है कि lot of people want to do this so badly, and end of the day how badly you want something, like be it success, be it fame, be it money, that's the only thing that matters, because then it basically means कि आप कुछ भी करने को तैयार हो, like मैं कुछ गलत भी करूंगा, मैं कुछ भी करूंगा, बस मुझे किसी तरह से वो, so there's a lot of that thirst in a lot of people, so it's just gonna go more and more। and इंडिया में अभी लोग भी तो है ही, population factor तो हमारा ज्यादा है ही, so it's just getting worse and worse, and it's just sad, and it's just I've had that a lot of times। I've had like a joke being lifted and done in bloody special also and all that, like a person who would open for me earlier, who has heard that joke 1,000 times, then he puts out a video of that joke exactly verbatim same, and what do? How many bridges do you burn? How many relations do you spoil? How many people do you fight with? तो आफ्टर अ पॉइंट ऐसे रियलाइज होता है कि चलो मैं ही लड़े जा रहा हूँ लोगों से, और फायदा कुछ है नहीं, उससे ज्यादा दिक्कत ही है, तो करना भी बंद करो। तो बस इट्स जस्ट अ सैड थिंग दैट यू हैव टू एक्सेप्ट, इट्स वेरी सैड। या But it must hurt, right? I mean, thoda matlab, I'm sure, because it's your baby, right? I mean, it's your stuff, so I can imagine how bad it must feel. It hurts so bad, because and seriously some jokes take like crazy amount of time। मेरा जो सौरभ गांगुली का मैं जो मेरा बिट है उसमें लाइक 1.5-2 साल लग गए थे, और उसके बाद उसमें मैं जो सचिन का बाल वाला पोर्शन है वो जेन्युइनली वो मतलब लास्ट के 2 महीने में वो ट्राई करके फिर वो क्लिक किया है, बिकॉज दैट्स हाउ इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज एक जोक कर दिया हो गया, बट वो करते 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 यानी फाइनली आफ्टर कभी कभी 1-1.5 साल लग जाते एक सही टैग आने में, तो वो टैग आया एक सही उस पे, और फिर उसके बाद देख रहे हो उठा लिया, बड़ा ही दिमाग खराब होता है, बट क्या करें अब, जिंदगी। So Abhijit, tell me, what is your process of writing a joke? Is there a set process? I mean, are you the types जो बैठ के pen और paper में लिखेगा, या फिर you are the one who likes to record yourself, or how do you work? So the thing is, I'm very active firstly on social media a lot, like active। I know that. Twitter I follow you on all platforms. Yeah, I know that. तो मैं ट्विटर और फेसबुक पे बहुत ज्यादा जोक्स वोक्स मारता रहता हूँ, वो सब भी पूरा। Love your shorts, by the way. Your shorts are really awesome. Thank you. Continue doing that, please. थैंक यू। तो वही मैं तो उसमें भी बहुत ज्यादा डालते रहता हूँ, सो आई हैव लॉट ऑफ ऑन व्हाटएवर इज हैपनिंग राइट नाउ, आई लाइक टू कीप राइटिंग जोक्स ऑन दैट, then there would be observational or something like that, like for instance like something with the wife, something happens and then I make a note of that, so I keep making notes, and then when there's a substantial number of observations around some particular topic, then I feel like I can, like for instance कुछ तो जैसे naturally भी आता है, जैसे ये मेरी मतलब again like the more you do comedy because the more you have to dig deep into yourself, because अब मैं like अब मेरे को अपनी लाइफ में ही ज्यादा करने का भी होता है कि मतलब क्योंकि जो so one of the things I'm trying to write a bit on is this only, that the fact that अभिजीत में H नहीं है, and how there's a lot of these number of basically हम इंडिया में बहुत सारे ऐसे हम लोग हैं जिनके माँ बापों ने नाम के साथ अलग कर दिया है, और उसकी वजह से the things that you have said, so this has been a pain point for me through all my life trying to make a bit about it, so it's basically things you experience, and around it you just keep making notes or something that's a pain point, sometimes you just go on a rant and then you realize कि अरे ये funny, इसको funny भी कर सकते हैं इसको, so this can be on stage content, then for me personally I have I mean it's not a great thing honestly, because but I try to do jokes about everything, so I like to do jokes about little bit about politics,
But I don't want to be completely a political comic also. I want to do jokes on marriage, my life, what I'm living right now, but I don't want to be completely just I don't want to be completely just doing marriage bits also. Then social commentary, kya chal raha hai, uske around bhi I want to do, but I don't want to be completely that also. So I don't want to be completely just one thing, which is if I can be honest, not a great thing, because again, it works better if you just do one thing and just keep doing that. That should be ideally, it's a better way to approach it in terms of finding your that audience. But मुझे personally वो थोड़ा सा बोरिंग मतलब वो मेरे को लिमिटिंग लगता है कि फिर मैं ये तो कर ही नहीं पाऊंगा, मेरे को अपने हर चीज पे ही करना है, मेरे को अगर मैरिज पे करना है, बट मेरे को सिर्फ मैरिज पे भी नहीं करना, मुझे चाइल्डहुड स्टोरी का भी कुछ करना है. सो I try for my personal thing, I try to have a breadth in terms of I'm talking about a lot of things, and be it politics, be it what is happening right now, be it technology wise, kuch jo aajkal relatable content wise, or be it around my personal life, the things I'm experiencing. So I try to keep it a mix of everything, and that's the way I approach it. You know, I personally love that bit. Go ahead, Julian. Sorry. Yeah, so I have a question. So I think I have read that you're one of the bilingual, I would say, comic. Correct? You're comfortable in English as well as Hindi. So which one is your preferred language? Or which one you're most comfortable with? So the thing is that when stand-up started, the thing again actually वो तो वही है ना कि basically क्योंकि दिल्ली में पैदा हुआ तो हिंदी का सीन काफी वही रहा. Most of these things are very less our choice than the way we than the things that we experience. So because I was growing in Delhi, तो हिंदी का काफी decent ही scene है, and English is because of again education and again the family that you're, and being Bengali also. Bengalis में तो English का तो ज़्यादा होता ही है थोड़ा सा. In fact, that's also one thing that Abhishek maybe will. So in Bengalis, Hindi, like my Bengali is not very good. I'll be honest. It's and especially by Bengali standard, because we Bengalis हमें पसंद नहीं आता अगर हिंदी वर्ड बीच में डाले while speaking Bengali. तो जो कि मेरा बहुत सीन है क्योंकि मेरी बंगाली बहुत ही खराब है, तो मैं हिंदी वर्ड को ना जैसे एक वर्ड है माछ खाना है, which means in between. So for that I would say बीच खाना है. And and that is something that lot of sacrilege. Oh, it's so wrong. So for a lot of my Bengali relatives and all, my parents also were like, "तू चुप ही रह उन लोगों के सामने, तू मत बोल. We are fine with you being a dumb fuck and less of a person, but तू ये बंगाली मत बोल." So इसलिए they were very shocked कि ये तो हमारे सामने इतना चुपचाप था, अचानक से stand up comedy कैसे कर रहा है. So I personally am comfortable with both, but abhi I'm at a phase that I find it's always a mix. It will always be Hindi English mix, but it's अभी हिंदी में मैं ज्यादा मेरे को फील मजा आता है क्योंकि वो ज्यादा नेचुरल हो गया बोल बोल के बिकॉज अर्लियर व्हेन वी स्टार्टेड ऑफ तब तो दिमाग में यही था that English is the only way we can do stand-up comedy means English में करना. So we would do completely English. That was the way. That's what we had heard and that's what we thought is the thing. So it's only after a point that you realize कि अच्छा मैं then एक phase हुआ जिसमें पता चला कि हिंदी में punchlines has a better effect. So we started doing हिंदी में punchlines. तो जैसे जैसे कोई वो चेंज होता गया, कोर्स चेंज होता गया, हमने अपना वो भी चेंज किया. Then you get to know that हिंदी में आप कर सकते हो. फिर तो प्रॉब्लम ही क्या है, फिर तो अगर हिंदी में कर ही सकते हो फिर तो हिंदी में कर लेते हो. So and you know first generation जो आप थे stand up comics with Veer and Saurabh, and they used to do it in English, right? I think yeah, you started after them. Saurabh, after them. Yeah, CJ, these guys were all doing it in complete English. So that's why, and in fact, honestly, not just them, but what we had even seen, the Russell Peters and all. तो हमारे दिमाग में था कि English ही होता है, ये मतलब Seinfeld देख रहे हैं ये कर रहे हैं, so it's just English only in which you're supposed to do this. So the comfort level of that कि अब मैं जिसमें भी भाषा में बात करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ. So that happened after some time, only after when you were in that comfort space of yours. And gradually, I mean, this is what we've noticed, right? वो English से हिंदी का transition भी काफी हो. जैसे अभी तो there are a lot of comedians जो exclusively हिंदी में करते हैं, right? I mean, there are some of the most successful ones almost purely हिंदी में कर रहे हैं अभी. So that transition is interesting. Because obviously मास कनेक्ट वाइज हिंदी का जो होगा, इनफैक्ट रीजनल लैंग्वेज का जो होगा वो कनेक्ट एक अलग लेवल पे होगा. अब लाइक अ पंचलाइन इवन इन कलकत्ता बंगाली पंचलाइन का जो इफेक्ट होगा दैट विल बी अ वेरी डिफरेंट वन देन
from a English ka. So, and that is true with every language only. Now Hindi happens to be the most spoken language in India, and especially in the north side of India. So that's why that Hindi connect will be there. And with the that's been the good thing also with Zakir and a lot of other Hindi comedians per se, that confidence of people also कि मेरे को सिर्फ हिंदी भी अगर आती है फिर भी मैं जाके try कर सकता हूँ, that also came up. So that's a good thing only, and that has come up a lot. So it's good, it's great. But one thing I've noticed, Abhijit, I mean, agreed that Hindi comics are doing really well now, but I've noticed with a lot of you, I mean, I've seen Anirban as well, and some other comics. I mean, you guys still prefer doing it in mix. You still don't do everything in Hindi because I think you are more comfortable in this language. Is that true? Because that's the way we talk. Right. Basically, the idea is that you, like, on stage has to be nearer and nearer to your off stage persona. तो मैं जो जिस तरह से मैं बात करता हूँ उसी तरह से if I can completely replicate my off stage to on stage, and if be just that's because I generally talk only in this way. Correct. So that's why it stays that. Otherwise वो fake लगेगा ना, अगर आप now if you transition completely to Hindi, it won't be natural. हाँ, बिकॉज वो नेचुरली नहीं है. अगर मतलब मैं बहुत ही अलग तरीके से बात करने लग गया हिंदी में और बहुत ही अलग ही हिंदी की, अरे यार हम लोगों का क्या है, जिसने अगर मैं बिल्कुल तो लगे अरे इसे क्या हो गया भाई, ये क्या कर रहे हैं. सो इट्स बेस्ट टू डू व्हाट यू आर, the way you are. It's best to do that, and that happened with somebody who's an English comedian per se. I will not take name, but somebody who's an English comedian, he suddenly started trying to do completely in Hindi. And he was saying stuff also ki my English is very bad, and it was hilarious because we all were listening ki his English is bad. He the one was the person who used to pressurize us into doing completely in English. So मुझे कुछ आइडिया लग रहा है अभिजीत, मुझे कुछ आइडिया लग रहा है. It won't be, I mean, he's a good friend only, but so we can say, but it won't be true to the thing only if you start communicating differently than what you do. So वो दिख ही जाएगा कि यार ये तो थोड़ा अजीब सा हो रहा है ये मामला. Yeah. So tell me, आपका जो famous phrase है, how did that originate? कि दुनिया में ups and downs होते रहते हैं, life में ups and downs होते रहते हैं. How did that originate? So I always, that's been a line I always say, that life ups and downs. Life ups and so I hope आपको पता लग रहा है how much I watch your videos, right? Yeah, I'm very a lot of it into तो ये definitely काफी ज़्यादा आपने देखा है. But life ups and downs आते रहते, life ups and downs आते रहते. So that's a bit also. बहुत पहले एक मैं bit भी करता था. And this was incidentally we get a lot of flack for cracking Modi jokes and all. So when Congress was in power, I used to do a bit on Congress, that how everything that happened, we used to try to convince ourselves that ठीक है यार कोई बात नहीं. So I had this bit on how when the first time the 2G scam happened, ठीक है यार कोई बात नहीं, life में ups and downs आते रहते हैं, ऐसी fight नहीं है. Then there was those were your French beard days, right? Yeah. Not French beard, but yeah, goatee. Goatee. Not the French beard, right? So and then there was the CWG scam, and then then the unemployment was recession was there. They like कोई बात नहीं यार, life में ups and downs आते रहते हैं. Then there was the coal scam. There was more things, and then we like yeah, ये life में ups and downs नहीं आ रहे, ये तो life में downs और further downs ही आ जा रहे. जिसके बाद you are having to convince yourself that the previous down was a up. So I used to do a bit on that, and after that life ups and downs आते रहते हैं. It's just stuck, and it feels वो whenever somebody gives you a bad news, no, उसको ऐसे react करना कि हाँ भाई आज show cancel हो गया, कोई बात नहीं, life ups and downs तो आते रहते हैं. It's just, it feels very funny to me. So yeah, all those personal things that have been going on. Nice. Jwalin? नहीं बाकी तो कुछ नहीं. Where in Mumbai, Abhijit? Actually, I am also from Mumbai. So आप मुंबई में अभी? Yeah, Ghatkopar to be precise. अरे सही घाटकोपर. मैं गोरेगांव में. उससे ज्यादा आगे के घर मिल नहीं पा रहे. वो बहुत ज्यादा महंगे हो रहे हैं वहाँ पे. वो तो है. And can you guess, like from my accent, like what would be my mother tongue? आपके accent मतलब त्रिवेदी दिख रहा है वैसे सरनेम से, तो मुझे सरनेम तो मुझे मदर टंग तो मतलब मैं तो सच में यूपी सोच लिया था. Hardcore Guju. So I'm a Gujarati. Yeah.
Hardcore So Gujarati. Abhijit is a damad of Gujarat, of course. Yeah. I Yeah. did not know That's you. why I brought this up. Yeah. But I'm sorry, but Trivedi I thought was a very UP surname for me or something like that. So if you look at my first name, correct, people think I'm Catholic. If you look at my last name, people think I'm from UP or MP, correct? But I think I'm from Gujarat, Ahmedabad. My parents still live in Ahmedabad. So yeah, and then I brought it up because I think your wife is also Gujarati, correct? So Yeah. Shah, like there I are was so many Shahs in Ghatkopar actually. I don't know from where your wife is, but yeah, it's more of no. a Jain community, Malad Ghatkopar, So I think Yeah. yeah. So but anyway, नहीं हम तो good. we तो met in नोएडा वो तो नोएडा से और हम तो दिल्ली में ही मिले थे so Oh, maybe but okay. Mumbai yeah, वाले नहीं हो. I Okay, I okay. even kid some like sometimes ज्यादा कोई बीजेपी का कुछ ऐसा वो बोलता है तो मैं बोल देता हूँ my wife is niece of Amit Shah तो अचानक से सन्नाटा आ जाता है ठीक है भाई फिर जो बोलना शाह है बोल नाम लो का यार कुछ तो फायदा हो ना. फायदा उठाना ही चाहिए Good, but good. yeah I love Gujaratis as people are just it's amazing how spirited and very jolly and amazing people so it's very entertaining and yeah so that's nice but yeah I would पक्का have आने never वाला guessed हूँ मैं that you are next Gujarati या next show अगर हो रहा है मुंबई में I'll be there most बस likely. बस लॉकडाउन ना हो भाई यही प्रे नहीं करते रहते होगा हैं जो बड़ा लॉकडाउन डर तो है नहीं होगा. It's I hope ना हो मतलब I'm पिछली being बार भी यही positive बोला और था लॉकडाउन अगर हो भी तो यार फिर से कोई बत्ती जलाने को या ड्रम बजाने को ना बोले बस. कुछ भी इस बात तो यार अब तो नहीं बोलना चाहिए इस बात तो नहीं बोलेंगे बट ठीक है I can see आजकल Jwalin इंडिया is में not तो liking the conversation कहाँ जा रहा है आजकल इंडिया में तो ऐसा हो रहा है कि कुछ भी हो जाए मोदी ने किया है. अभी अहमदाबाद के बीच में भी मोदी को ब्लेम कर रहे हैं सब. तो मतलब लाइक देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड इट. कुछ भी हो रहा है मोदी कर रहा है. ऐसा हो गया अभी तो. वो शास्त्री वाला देखा तो वो शास्त्री वाला अभिजीत आपने डाला था किसने डाला था अभी रिसेंटली जो शास्त्री का है कि ड्राई स्टेट में मैच रखोगे हम 2 दिन में रैप अप कर देंगे. ये गोयल का एक शास्त्री का शराब पीने वाला जोक आता है ये शास्त्री शराब का गोयल का एक जोक आएगा ही आएगा वो पक्का वो उसने पेटेंट कर दिया है तो वो अब हम में से कोई अगर डालने की सोचता भी ना हमें लगता है नहीं यार ये वो तो डाल ही गोयल का देगा. ही जोक है ये वो उसका है ये तो उसका So Abhijit, I mean, I have seen Vipul Goyal in some of these podcasts. I mean, he is hilarious, man. I mean, he's joke a minute, huh? He's hilarious. He's full. हाँ क्या चल रहा है यार तुम लोगों का ये? He's like a machine gun, man. मतलब हर sentence is like a joke. He's too punch, funny. punch. And again, honestly great to see like lockdown where he's getting his due. It's great to see him getting his due because he's been so funny and he's been nailing it consistently since such a long time. So it's great to see him get his due right now. I mean, although he's been doing great only for quite some time, but I think during this phase he has really killed it. So and it came across now. I try to follow a lot of stand-up comics, and invariably people say that he's one of the funniest comedians. He is for me. He's not one of the. He is the funniest comics. He is for sure. He's the funniest comic because nobody like that. Like his general thing is, his demeanor is hilarious. He's so funny. No, absolutely. But the best part about the Indian stand-up comic scene is now there are so many different styles. I mean, you can pick and choose the ones you like, and because itne alag genres hain abhi. I mean, you have Zakir Bassi, doing their bit in Hindi. Then, there's there's Anirban, dinka mixed hota hai. Then there are the English stand-up comics. Like Kanan does most of his stuff in English. Yeah. So it's beautiful to see so many different kinds of stand-up comics, right? Because otherwise it gets very boring. Sabka ka style ek jaise ho, then it gets monotonous. That is absolutely true. Like sabka style cannot be the same. So otherwise it'll start sounding repetitive. So that's why everybody has gone actively into it and tried to have their own style as well. Like it makes sense than just be sticking to just one format because that also happens, when there's a very successful when format works a lot, there's a lot of replication that tries to happen around that. So there'll be a lot of comics who start sounding like that. Each but that's in a newer comic phase that the newer comics start trying to sound like somebody who has made it. But
it has to stand out, and it works. It definitely has an audience for it, for sure. Yeah. तो आपका अभी travel कितना चल रहा है? I know you were in Calcutta. अभी you're traveling again? Abhi, yeah, I'm 4th March, for 5th को I'm going again to Jaipur and North and everything. So थोड़ा travel चल रहा है. मतलब basically वो testing waters वाला थोड़ा करके देखना है कि full on कूदने से पहले कि testing waters वाला, because North side में तो अभी lockdown भी ज़्यादा नहीं है और सब कुछ ही चल रहा है. So it's better there. But in Maharashtra right now, in Bombay also it's a cause of concern. तो अभी मेरा 28 का show कल ही तो show होना था थाने में, तो building got sealed because of number of cases in that. तो अभी बस फिंगर्स क्रॉस्ड कि उतना सीन ना हो, बट बाकी देखते हैं क्या होता है. उम्मीद पे तो दुनिया कायम है. And ups and downs आते ही रहते हैं, right? लाइफ अप्स एंड डाउन्स आते ही रहते हैं. पिच की तरह, इंडिया इंग्लैंड की पिच की तरह अप्स एंड डाउन आते रहते हैं. So Abhijit, any plans of after of course everything pandemic goes away, US store का कुछ plans हैं? अरे यूएस टूर का तो पहले भी प्लान था. पूरा वीजा आपके ट्रम्प चाचा ने लगने ही नहीं दिया. वो वीजा कैंसिल हो गया उस चक्कर में. वरना तो वैसे पूरा ट्रिप वो तो बहुत ही बड़ा घाव है अंदर कि मन में तो मैं मस्त ऐसे न्यूयॉर्क के सपने बना चुका था, बट वीजा गॉट कैंसिल्ड. सो या वीजा गॉट रिजेक्टेड. दिस लाइक आई थिंक लास्ट ईयर. तो बट अभी फिर से अभी स्टार्ट होगा तो देखते हैं. सो अगेन फिंगर्स क्रॉस्ड. So Abhijit, आपको मैं ओपन इनविटेशन दे रहा हूँ. I'll send you my details on DM. You are most welcome. You can stay with us. हम लोग अभी मायामी में है. We are moving to Atlanta soon. तो आपको मैं फोन नंबर दे दूंगा, वो दे दूंगा. Please feel free to call me anytime. And আর কিছু না তো বাড়ির খাওয়া তো খেতে এসেই যাবো. বাড়িতে হ্যাঁ, I can assure you বাড়িতে খুব ভালো খাবার পাবে. I mean ours is a mixed marriage as well. My wife is also not Bengali. She's from Delhi. Okay, but wow. And she's a vegetarian, but she cooks amazing non-vegetarian food as well. So she's a fabulous cook. So खाना तो same here. Absolutely, we are living the same life basically. हाँ, खाना और देखो पीना तो मैं गारंटी कर सकता हूँ. I don't know if you drink, but that is my department. I'll take care of that. Cool. And you'll get great food. And of course you're welcome. And Abhijit, so अनिर्बान और उससे जेमी से बात हो रही थी. तो I was planning to do a quiz, जैसे वो आपने अभी रिसेंटली जो किया था अंगद के साथ, उस फॉर्मेट का क्विज. So both of them are very interested. Again, I don't know आपका availability. आ तो जाएंगी, बट मैं पक्का हारूंगा फिर से. अनिर्बान आप हारोगे नहीं, तो हार ही जाना नहीं. हाँ, but I think you would have given a close fight. आपको तो बहुत issues हो रहा था. Connection issues was causing a lot of trouble. पर क्या करें अब तो. But Jamie तो also Jamie is a crazy level of Landy. So अब नहीं, आप तीनों में I think contest अच्छा हुआ है. I know Anirban is also sports crazy. Anirban is a very quiz competitive person in general. He's very a full notepad लेके आता है मस्त. And he does very well also in most of the quiz. Yeah, he does very well. He's great. So it'll be fun. तो मैं आपको बोलूँगा, if you are available, I'll invite you. आप आ सकते हो तो आना. Again, I'm hoping you had some fun as well, because we really it was great conversation. अरे sandpaper पे test cricket we can just continue endlessly talking. And फिर वो कोहली वैसे रोहित शर्मा वाला argument तो वो भी अपने में एक favorite never ending चलता रह सकता है वो वाला. So yeah, it was great fun for me, guys. No, and again, thank you. Really, you made time. I know you're very busy. आपका 2 दिन टेस्ट मैच का भी खराब हो गया, unfortunately. But hopefully you'll get to see another test match live very soon. One request I have, Abhijit, agar if you really had a good time, I'll request you, once I post the video, if you can share it on your Absolutely, I'll do that. That'll be great. For sure. And again, I'm going to give you that offer again. मैं आपको अपना details DM कर दूंगा. Anytime you are in the US, then in Atlanta, for sure. Done. Just pick up the phone and just call me. I'll give you my cell phone number and everything. It'll be absolute honor to host you. And feel free to bring your wife as well. We'll be more than happy to host both of you. वो तो वीजा पे डिपेंड करता है फिर से. हो जाएगा. Good luck with everything. And again, thanks for giving us so much time. Thank you Abhishek. Thank you Jalin. Thanks a lot. आपको तो मिलता है बॉम्बे में मस्त. ठीक है. All right, guys. Thank you. Bye. Take care, man. Bye. Take care.